YouTube. I think I might be live. You should just go to my channel and check that out. And yes, we are. Huge stacks will be made today. And I think I figured the problem out as well. वो जो cards की थी, या अपना डबल ऑडियो नहीं आएगा. एंड पॉप आउट चैट कर देते हैं. And I can even have the pop-out chat be visible over there. आ गया है भाई, अपने को चलाना, अपने को चलाना. So funny man, doing it after a while is कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या चल रहा है पता ही नहीं है. Okay, gonna add window capture and create new chat capture करते हैं. And okay, and chat है कहाँ. This is the chat. Awesome. Okay, इसको यहाँ ले आते हैं. And this should be displayed. And थोड़ा सा नीचे से रखते हैं ताकि and layout के नीचे ले आते हैं. All right, I still know how to do shit. Awesome. And lock कर देते हैं. Lock कर दिया जाए. All right, phew. कार्ड्स छुप गए हैं, चैट आ गई है, इंस्टाग्राम के सोशल्स आ जाएंगे. एंड कम से कम पहले OBS चलाने का कुछ फ़ायदा मिल रहा है. ऑल राइट, कार्ड हाइड. लेफ्ट टेबल के कार्ड्स यहाँ पर देखते हैं, राइट टेबल के कार्ड्स यहाँ. तो बिल्कुल एग्जैक्टली दिखने वाली है. एंड दिस शुड बी फाइन नाउ. इट शुड बी गुड. जनता तो जा चुकी है, लेकिन फिर जनता को बुलाना पड़ेगा वापस. आ जाएंगे थोड़े थोड़े टाइम में. व्हाट्स अप संदीप यादव, थैंक यू थैंक यू. एंड पीछे अच्छा ये दिख रहा है ना इसका चैट का. सो गोना लॉक दैट. ऑल्ट दबा के डिलीट कर दो तो ऐसे हो जाता है. आती है भाई चीज़ें अपने को. बटन पे रेस करेंगे. बटन पे क्या स्टैक साइज है इन लोगों के. ठीक है, बटन पे रेस करके आते हैं. 2.15 किए हैं. देखते हैं कैसे रिएक्शन आता है इन लोगों का इसके लिए. 3 बेट करेगा क्या. बफलो सोल्जर 3 बेट कर दिया है. आई हैव किंग 10 ऑफ. छोड़ रहा हूँ. थोड़ा और डीपर होते तो चलो शायद खेल लेते. Awesome. तो लॉन्च पार्टी में अभी भी जिंदा हूँ भाई. आई हैव मेड इट पास्ट द री एंट्री टाइम विच इज कमेंडेबल. या एंड कहाँ पर है. बाकी ये बंद कर सकते हैं. ऑल राइट, दैट थिंग्स क्लोज्ड. OBS इज क्लोज्ड. एंड 21 बिग्स इन द. अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा ना. नाउ थिंग्स आर गुड. नाउ नथिंग्स विजिबल, नो कार्ड्स विजिबल. अर्जुन चड्डा, चड्डा जी, मैं ऐसे कहूं तो आप लाइव सीरीज ब्रिक कैसे करते हो. बर्न करने में क्या मजा आता है चड्डा को. कुछ करोगे, मतलब कुछ करोगे. वियतनाम ही जा रखे हो गया अभी. See guys, there's no delay, so I can straight up be talking. And आराम से सब कुछ दिख रहा है. I think my cards are hidden well this time round. Yep, हिडन कार्ड्स. इसको भी लॉक कर दिया जाए. कार्ड हाइडर को भी लॉक कर दिया जाए. एंड यप, 9 बिग ब्लाइंड से रेस करके खेलेंगे क्या. नो, वी आर गोइंग ऑल इन.
अच्छा, नेपाल वॉज इन ग्रीन। अच्छा भैया, a blind squirrel also finds a nut somewhere or the other. तो we've got called एंड दूसरे पे फोल्ड करते हैं, we've got called एंड हमारे पास क्वींस है लेकिन उसके पास किंग्स हैं। ये कैसा है, कैसे मैं कैसे निकल गया यहाँ, लॉन्च पार्टी से मुझे इन लोगों ने बाहर कर दिया। नहीं यार, मैं तो 9 बिग ब्लाइंड्स में स्किल गेम दिखाया था, मैंने क्वींस उठाई थी। वाओ, पेनफुल मैन, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू लूज दिस वन। यहाँ पर अरे अरे अरे, मुझे समझ में आ गया ये हो क्या रहा है। टेबल वन छुपा दो अभी। नो, ये कैसे हो गया। एंड हाँ, वही वही, मैं नेपाल नहीं आया ना, वरना पूरा अर्जुन को तो मैं ही बाहर करता रहता हूँ हर एक टूर्नामेंट में, अजी ऐसी की तैसी। ए, ऑनलाइन बॉयज को कहाँ खेलना आता है लाइव। हाँ, getting in money so bad. Oh my God, I had 9 big blinds and I had queens. Oh no, so bad. I play so bad. मजे लेने आ जाओ। हम्म। दिवेश, तू ना जाके जरा काम वाम कर लो। गेटिंग इन मनी सो बैड, मतलब ये कमेंट दर्द क्यों कर रहा है। मैं अपने थॉट प्रोसेस की सोच रहा था। मैंने क्वींस आई थी, कितने ब्लाइंड थे, 9 बिग ब्लाइंड्स थे, 9। ओके, कोई और आईओपीसी चल रहा है तो कुछ ना कुछ नया तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने ही वाला होगा थोड़ी देर में। सो एट 4 वी हैव हम्म जो स्टार्ट हो चुका है, एक और शुरू हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कौन सा खेलूं, फेज खेलूं या 5 लाख गारंटी खेलूं, दोनों ही क्यों नहीं। एंड मेरे हिसाब से पहले 5 लाख गारंटी के लिए जाते हैं, फेस किसी और दिन भी खेल सकते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग से खेलने को मिलेगा ना, कम से कम 50-100 ब्लाइंड चल रही हैं। ओके, इसका इसको बनाना पड़ेगा हमें टेबल वन। तो टेबल वन में इसकी सेटिंग्स डाल देते हैं। टेबल वन की सेटिंग्स विच इज़ 880, दैट सीम्स फाइन एंड ओके। एंड लेट्स सी, टेबल वन आ गई है। हाइड भी कर देते हैं हम अपने कार्ड्स एंड आई थिंक माय कार्ड्स वोंट बी विजिबल, अभी स्मॉल ब्लाइंड में हूँ। हम्म, देखो अब ढंग से अपना सेटअप हो गया है। नाउ आई हैव एसेंशियली यूज व्हाट इज कॉल्ड विंडो कैप्चर। ये ओबीएस के भी ना नए नए तरीके, मुझे डिले स्ट्रीम करनी ही नहीं है भाई, जब तक चैट से बात नहीं हो पाए तब तक मजे कैसे आएंगे। ओ नो, ओ नो, ओ नो, मेरे मजे ले लिए तुमने। हाइड कार्ड्स कहाँ से करते हैं। अबे यार नहीं, अब देखो किस्मत की बात है कि हावर्ड अगर देख रहा था वहां पर, मैं जब एडजस्टमेंट कर रहा था। देखो नाइन्स क्यों नहीं, साइक्लोप्स। ओके, वी 3 bet एंड वी गॉट अ कोल्ड कॉल। ये इधर वे ने पत्ते देख लिए हैं क्या, ये बोल रहा है आके हराऊंगा मैं तुम्हें। तो तुम लोगों ने तो देख ही लिया है। इस बोर्ड पे और छोटा जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। पर डीप भी हैं तो इतना नहीं जाना चाहिए छोटा। ठीक है, कॉल किया है लौंडा, अच्छा जी। ये जैक इज लाइक ए कार्ड बट वी डीप इनफ वेयर वी कैन डू थिंग्स। यहाँ पर कैसा जाना चाहिए, छोटा नहीं जाना चाहिए, फिर बड़ा ही जाना चाहिए। एंड ही फोल्ड्स, ठीक है। 8 से नट्स, मतलब मुझे बता दो आजकल क्या चल रहा है। अर्जुन, हर दिन ऑनलाइन खेलते हो, तुम्हें पता ही होगा ऑनलाइन में नट्स आजकल क्या चल रहे हैं। मैं वो हैंड छोड़ूंगा ही नहीं, रिवर रिवर पे सेट वेट लगाएंगे या वन कार्ड गटी लगाएंगे। तुम बता दो बस मुझे। इतनी स्किल तो है ही तुम में ऑनलाइन में, मैंने सुना है इतनी स्किल है तुम्हारे पास ऑनलाइन में। लगा लेते हो तुम कभी कभी, यही सुनने में आता है बस। हम्म, आई थिंक द लेआउट इज लुकिंग प्रीटी डिसेंट आल्सो राइट नाउ। किसी को स्पार्टन, ओ
इधर जरा रेस करके खेल लेते हैं, अपन डीप है ना तो बड़ा बड़ा ही खेलेंगे। अरे नहीं यार, वी वन डीप, इफेक्टिवली डीप नहीं थे इधर। मुझे लगा मैं काफ़ी डीप हूँ क्योंकि अभी अभी रजिस्टर किया 50 100 पे। सो वी रेज 3 बिग ब्लाइंड्स, गलती कर दी, थोड़ा बड़ा रेस कर दिया, बट कोई नहीं। देखो सामने से ही हमारे ऑल इन चले गए लोग। ये बाबा तूफानी, हम्म, बाबा तूफानी ठीक है, कॉल करते हैं। बाबा तूफानी ने देखो, बाबा तूफानी को लगता है कि हमारे पास यहाँ पर ट्रैप्स होते ही नहीं है। कहाँ का हार्ड का, यहाँ किंग्स है ब्रो मेरे पास। तुम मतलब क्या है, एस क्वीन से मुझे ट्राई, मतलब सोचिए मेरे पास कुछ होगा ही नहीं यहाँ। ले गया मैं तुम्हें, घर ले गया मैं। इतना 8 बिग ब्लाइंड, अगर ये कॉल कर रहा है तो इस पे कोई हैंड नहीं होगा तो मेरा एस क्वीन मॉन्स्टर है, मैं ऑल इन कर देता हूँ। सिखा दिया मैं बच्चों को खेलना। हाँ वो गलती से सही में एक्चुअली 3 बिग ब्लाइंड्स रेज नहीं कर रहा था मैंने, वो हो गया था। एंड उसके बाद ट्रैप देखो, ऐसे ट्रैप लगाना पड़ता है। नाउ लुक एट दिस, आई एम द चिप लीडर। अच्छा मेरे राइट वाले पास ज्यादा चिप्स हैं, पर ठीक है ना, अभी लपेट लेंगे राइट में बंदा वैसे भी। क्या स्किल स्किल देख रहे हो, मतलब लोगों के दिमाग के अंदर मैंने सोचा कि अगर मैं 8 बिग ब्लाइंड कॉल करूंगा तो वो बोलेगा अरे इस पे तो हैंड ही नहीं होगा, अगर हैंड होता तो क्या। मेरा एस क्वीन यहाँ पर मैं 3x को पहले फ्लैट करके आया था, तो अब तो अंडर रेप्ड हूँ मैं। And मतलब लोग ज्यादा सोचने लग जाते हैं। पोकर इज अ वेरी सिंपल गेम गाइस। अच्छा हैंड है, हाईली लाइकली यू गोना विन। एंड आउटप्ले कुछ लोगों को करने की कोशिश करा करो जो सोच रहे हैं, जो नहीं सोच रहे हैं उनको काहे आउटप्ले करना, वो अपने को खुद आउटप्ले कर देंगे। सो वी डिफेंड इन द बिग ब्लाइंड एंड फोल्ड करते हैं। जैकेट ऑफ सूट था यहाँ पर, दिक्कत ही नहीं है कोई, बहुत सही। लोग अपने आप को आउटप्ले करने के लिए खेलते हैं गेम, हमें क्या मेहनत करनी है उनको आउटप्ले करने की। एंड यहाँ पर क्या करना चाहिए 17 बिक्स के साथ, वी आर गोइंग ऑल इन गाइस। दूसरी जगह यहाँ स्मॉल ब्लाइंड से फ्लैट, स्मॉल ब्लाइंड से फ्लैट फ्लैट करते रहते हो। एंड बाबा तूफानी सोच रहे हैं ओके वी गॉट अ कॉल इन द फर्स्ट वन। ये तो दिखा देता हूँ क्या है मेरे पास। एस किंग है, पर एस किंग कभी जीतता कहाँ है। अट्ठियाँ तुम बोल रहे थे नट्स होते हैं यार, अट्ठियाँ नट्स ही निकल गए वहां पर। बंदे ने वहां पर फुल हाउस लगा लिया। ओके लेट्स चेक दिस बोर्ड। थोड़ी गड़बड़ चल रही है यार, मतलब एस किंग कब जीतता है, मतलब क्यों मैं मेहनत करता हूँ। जब तक एसेस किंग्स नहीं आते तब तक क्यों खेलना है। मतलब अंडर द गन ओपन मेरा 3 बेट शव, और वहां वो बोल रहा है मेरे पास एट्स आ गए हैं, अर्जुन ने बोल दिया है एट्स इज नट्स, आई एम नॉट गोना फोल्ड। ऑफ कोर्स ठीक है भैया। मजे कर सकता था मैं इस पत्ते पे कभी कभी, मेरी होल्डिंग लेते हुए। कोई नहीं, डेस्कटॉप ऑडियो ला दें क्या, तुम्हें भी कार्ड सुनाई देंगे। एंड यप, ओह थैंक गॉड द क्राउड इज बैक गाइस। सॉरी वो थोड़ा मतलब यू गेट रस्ट, स्ट्रीम रस्ट कह सकते हो तुम उसे। अपने को स्ट्रीमिंग भूल ही गए थे यार, एक दो ग्लिचेस आ गए थे यार ओबीएस में, उसकी वजह से आई हैड टू रीस्टार्ट द स्ट्रीम। बट नाउ थिंग्स लुक गुड, एवरीथिंग इज रनिंग रियली वेल। ओबीएस में कोई लैग नहीं है, कार्ड्स आर हिडन, तो लुक्स गुड लुक्स गुड। और ये क्या लेट पोजीशन पे रेस कर रहा है, इसको मैं 3 बेट करके खेलेगा। ये नाम क्या है इसका, हावर्ड रोर्क। अच्छा पिछली बार भी ये जीता था ना, ठीक है। हाँ वेरी वेरी गुड प्ले, आई अप्रूव दिस प्ले व्हेन मेरे पास 8 हाई है गाइस, आई एम फोल्डिंग बट 180 बिग ब्लाइंड्स मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा अपने 8 हाई से। मतलब बंदे ने देखो, ही वांट्स टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर देयर, कि तुम्हारे पास जब एसेस किंग्स क्वींस जैक्स ऐसे टाइप के हैंड है तो मेरी 180 बिग ब्लाइंड ले लो, लेकिन एक बार मैं तुम्हें
डोमिनेंस दिखाऊंगा अगर तुम्हारे पास हैंड नहीं है 180 बिग ब्लाइंड ऑल इन करके, विच ही शोड एक्सप्लिसिटली। तो वेरी गुड प्ले बाय हिम, आई अप्रूव दिस प्ले, अर्जुन डबल अप्रूव्स दिस प्ले। सो गाइज चैट में यार बताओ तो कौन कौन है यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन अबाउट क्या आगे इस महीने दिखने वाला है कंटेंट में। ऑफ कोर्स आई विल बी स्ट्रीमिंग सम ऑफ द आईओपीसी इवेंट्स, आई विल बी शोकेसिंग सम ऑफ द फाइनल टेबल्स एज वेल, एंड थोड़े ऐसे टाइम में दिखाएंगे अगले दिन जब सब देख सके। मतलब ग्राइंड अपनी तभी अच्छी लगती है ना, रात के 4 बजे तक जब खुद फाइनल टेबल में होते हैं। वो थोड़ा दर्द लगता है यार, रात के 4 बजे दूसरों को फाइनल टेबल में देखते हैं, दूसरे जीत रहे हैं 20-20 लाख रुपए, आप देख रहे हो मैं आज 1.5 लाख रुपए हार रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन देखेंगे शाम के 4-5 बजे देखेंगे आराम से, पूरा वेगस में घुमाओ फिरा के दिखा मैं दिखाऊंगा। एंड वहां से ऐसे कर सकते हैं, फिर देख इंस्पिरेशन मिलता है ना। शाम के 4 बजे तुम देखोगे तो 6 बजे खेलने के मतलब अपने आप फाइनल टेबल पे पहुंचेंगे। यहाँ पर मतलब रात के 4 बजे देखने में एक तो कम लोग होते हैं, एंड उसके बाद थोड़ा ये भी है ना कि थोड़ा दर्द लगता है कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर। सो डू लेट मी नो इन द चैट गाइज, कौन है यहाँ पर, क्या चल रहा है सबका। हम्म, I'll just go check it out कि stream is running all good. And थोड़े hands तो नहीं आए अभी। हम्म, डी कार्विन कौन है? ओह ये तो अशित है, अशित लॉन्डे। अशित के अगेंस्ट ये रेज करके खेलते हैं। एंड देखते हैं अशित क्या करता है। ही फोल्ड्स, ऑल राइट। सो आई हैड एन एस ओवर देयर, एस 3 ऑफ सूट था मेरे पास, तो वहाँ पर जीत गए, तो दैट इज गुड। बताओ यार चैट में सब लोग गायब हो गए, 20 लोग हो, कौन कौन हो ये तो बता दो, एक बार पता चले। एक बार चैट का भी मैं फोल्डर ठीक कर देता हूँ, इसको ऑल्ट नीचे एंड देन पिक इट अप एंड लेट इट राइड अप। या नाउ द चैट लुक्स गुड। बटन पे फोल्ड करते हैं। ऑसम। चिल इज हेयर, उमेश शर्मा बोल रहा है। कोई बात नहीं कर रहा है तो सिर्फ चिल चल रहा है यहाँ पर। सब लोगों ने अपनी ग्राइंड शुरू कर दिया ऐसे लग रहा है, और साइड में लगा दिया है मुझे, मतलब मेरे साथ ऐसा व्यवहार। कोई नहीं कोई नहीं, ग्राइंड इज मोर इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं अपना प्लान बताता हूँ एक्चुअली। मतलब ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे इसलिए आगे लोगों को सरप्राइज भी रहेगा। मैं भी पहले एलए जाने वाला हूँ। अब तुम्हारे हिसाब से बोलूँ तो कल जा रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइम मेरी कल फ्लाइट है। एंड देन विल बी गोइंग टू वेगस। और ये वेगस में मैं 2 ट्रिप्स मार रहा हूँ इस बार। वापस आके थोड़े दिन मुझे और काम है, बट या यहाँ पर बाबा तूफानी के अगेंस्ट बदला लेंगे ना बाबा, तो रेस करके खेलेंगे। हम्म, ही फोल्ड्स। पिछली बार सबक सीख लिया है, मेरे पास 6 आया था, पर ऑल गुड। Mohit from Bangkok is here. Holy shit. What's up, Mohit, man? Been a while. Sick. You brought back a bit of trauma as well as a few memories. All right, we're gonna be racing over here. And we're going to be in LA. So, Mohit, your base is, I think, so, was at a while once it was in LA as well, right? And we're going to be betting this flop small. Yep.
And like I was saying, after that, I am heading to Vegas. Vegas में for my first trip, I think I'm playing like 4 5 WSOP events. Gonna be playing Cash as well, and थोड़े meetup games planned है, वो शायद खेलने को मिले. So उसके around content बनाएंगे and yeah, should be fun. IOPC भी चल ही रहा होगा. Maybe I'll stream from there as well a little bit. Haha, nice Mohit, you're in California itself. Yeah, Vegas तो बगल में है यार, फिर क्या दिक्कत है? Rishabh Rawat, is going to Vegas trip more profitable than your online grind, or is it both fun and grind? So I'll definitely say Vegas is expensive, man. The cost of living, like a hotel, like the cheapest hotel probably is like $120 a day. Then essentially you'll at least need like $30 to $40 for food, then transport costs. So $200 to is like bare minimum, I'll say. Like, but that's the opportunity cost, and then you add flights and ये सब तो काफी चीज होती हैं. But I definitely, my trips are a little different in Vegas. I don't play many WSOP events. I play cash, sit and goes, all these things. So I think I recuperate most of my times. My trips, like I've had losing trips in Vegas, but like not huge losing trips because tournaments की variance और cash game की variance अलग होती है. Um, so yeah, tournaments can be brutal, right? आप हर दिन day 3 बना रहे हो, but day 3 is like still probably like 5x your initial buy-in. So tournaments are tough, man. Like live tournaments, the opportunity cost just increases. ना आपको एक एक दिन में एक ही tournament खेल सकते हो. It's not like you can multi-table like online. Some people do multi-table live tournaments also, but the max you can do is like 2 or 3, right? Leaderboard के लिए जो लोग लड़ते रहते हैं. So yeah, opportunity cost high है, पर फिर rewards भी बड़े हैं ना, because buy-ins are big, everything is big over there. Like the smallest game you can play live in cash is something like $300 buy-in, right? So we'll be 3-bet shoving over here, and if he decides to call, I'm going to be showing my cards, and if he decides to fold, and hopefully not an 8 on the river. So you saw अपना ace 10 जीत गया. So, वही वेगस के बारे में वापस बात करो. या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई, बट वही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना लेके चलो, एंड इट्स मोर ओवर क्वाइट अ फ्यू पीपल डू इट for fun as well. Like a lot of people come in just for fun, and यहाँ पर इस spot में मैं क्या करना चाहता हूँ. I think I want to call, and I did call. बट वेगस डेफिनेटली, अगर पोकर प्लेयर हो यार, एक बार तो जाने का मन करता ही है ना. लाइक माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट देयर, आई एक्चुअली जब मैं गया था तो बिल्कुल मैं तो मेन इवेंट खेल के आया, एंड आई थॉट फर्स्ट टाइम गया एंड दैट वुड बी माई लास्ट टाइम. एंड गाइज वी हैव एस क्वीन ऑफ clubs over here, and everyone's all in, right? No one's called. So ace queen of clubs versus aces. We'll take 5 for a chop. But that is not the case. भाई के पास सीधे aces ही थे. Must be nice. I had ace queen of clubs. I just announced it rather than show it to you. So that was sad. No, I don't. I'll be honest. I play staked for certain level and up. So I am staked. Yeah. For live events, I'm going to be raising that over here. Online, pretty much the games are too small, so I play my own money. Live can be brutal, man. Your swings can be huge, huge swings. So I am staked online. Sorry, live. Gonna be betting 25% भी कर सकता हूँ, पर इतनी मेहनत नहीं कर रहा मैं. वहाँ पर हाइड करो, लिखो, ये सब करो. And Mama Sita is okay. They decide to check raise me. यार इस साइड से चेक रेज कर रहे हो, ठीक है. कॉल देखते हैं क्या होता है. टर्न इज अ किंग विच इज गुड फॉर मी देन फॉर हिम. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ लग गया मेरा, बट स्टिल आई एम स्टिल गोना चेक. रिवर्स इन 8.
and let's see what they do. And I have aces, so we'll be calling. And they have, oh my goodness, the jack 8. जैक पे ही रखा था यार मैंने उसे. I thought I'll extract value, but yeah, he got the 8 on the river. Good hand, sir. Good hand. क्या यार? Of course he didn't like the turn king. But I guess the money still goes in on the flop and he gets there. कौन है भाई मामा सीता? Probably an online reg only. ये pads की अगर कोई stream देखता है तो आई थिंक पैड्स का अवतार और पैड्स ही चिल्लाता रहता है मामा सीता मामा सीता. Does the stake player pay expenses also? No, everything is opportunity cost, man. एंड सब कुछ मेकअप में जाता है एंड सब कुछ एक तरह से आधा आधा ही मतलब व्हेन यू चॉप ऑफ कोर्स वो पीछे वाला खर्चा जाता है. सो इन वन वे यू आर पेइंग फॉर हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस, हाफ ऑफ द मतलब एवरीथिंग इज चॉप्ड. स्टेक्स और मूव अप करना पड़ेगा फॉर वेगस. Yeah, definitely. It takes a while. It took me what 6 years to go to Vegas for the first time, I think. जब प्रोफेशनली खेलना शुरू कर गया था थोड़े बहुत. अब तो प्रोफेशनली नहीं बोल पाता मैं अपने को. आई एम अ प्रोफेशनल. नो नथिंग राइट नाउ. जस्ट गुड स्पॉट इन लाइफ. सोच रहे हैं क्या करेंगे. That's pretty much what it is. एक टाइम में poker was easy. I'll be very honest. Poker used to be easy. It gets tougher and tougher. But ठीक है. I'll be folding that. Aces तो फट गए. Awesome. Any other questions regarding Vegas? Vegas में और क्या है? Vegas में of course मैं कब गया था first year? 2016 I think. Then I went 2017, 2018, 2019. 2019 was the last time I went over. पिछले साल when it happened in November, I did not go. I was planning to go for the main, just the main, but फिर वो हुआ नहीं. So I think at the end good decision ही था नहीं जाने का. And this year we are here. This year it's going to be huge. कहानियाँ जो सुन रहे हो पेरिस और बैलीज का रूम सब कुछ everyone's loving it. Mohit, no, not into NFTs. I fully understand you are definitely into NFTs. I've got quite a few friends who are into it. I just didn't venture into them. Uh, yeah, I guess you can tell right now that the market is lucrative enough to get in, right? That might be the case. Although I think when you win a IOPC, you do get NFT type of virtual trophies as well. Since you get a physical trophy as well as a virtual trophy. So those people who are going to be winning an IOPC are going to have an NFT. Mm-hmm. Ashish, I'm sorry, man. I'm just the content creator here. I have no idea. You can definitely message support. They'll definitely help. They have like a 24-hour support, I think. So they'll definitely help you out with your leaderboard issue. And this thing with Spartan also came about pretty much in the end. I was planning on going just for the main and like a week before that. And then I saw the schedule. यहाँ पर का देखा मैं कि कैसे और events हैं. Then I was talking to थोड़े बहुत दोस्त जो वेगस जा रहे हैं. सब लोग बोल रहे हैं कैसे है मेक्सिको में बैठा है आ नहीं रहा है. So things happened and I recently booked my flights for the whole first trip of mine, which is from like the second, sorry, from the 3rd till the 14th. मैं फिर 8 दिनों के लिए वापस आऊँगा and then I'll be going back again on the 22nd or so. So that should be fun. Will be really there's like a certain group of people I play with, like the games I play, be it cash games या sit and go. So उन लोगों से बीच बीच में कभी कभी बात हो जाती है and yeah, would be nice to see them after quite a while. Most of them are Europeans, very good players. I don't like to play against them, but बाकी essentially
Yeah, the game has to start, so you have to play with them, and they're really good players. Europeans बहुत सही सही खेलते हैं यार ये लोग. Not getting any hands as such. Ashit is all in for 44 bigs. Pretty big shove actually. Cost of living in Mexico. Right now, I'm staying in an apartment, which is like the monthly. I just asked him how much he'll charge me for a month. So it's $600. It's a pretty nice two-bedroom apartment, fully air conditioned. I have like the best of internet. That's why I can stream. I have full kitchen and all. So $600 might be a little high for Mexico, but मुझे एक ही महीने रहना था, पूरा लॉन्ग टर्म रहना नहीं था, तो एक जगह जो देख ली उससे ज़्यादा मैंने बोला अब इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया जाएगा. $600 कितना होता है? डॉलर टू रुपीज़ ऑलमोस्ट रीचिंग 80, तो लाइक 45,000 रुपीज़ होगा, विच इज़ नॉट बैड मैन. लाइक it's a nice place. I have peace of mind over here. It's a secure community. So ठीक है यार. And cost of food might be slightly higher than India, but not hugely higher in Mexico. So yeah, I was living a little more baller when I was living in Playa de Carmen. जब COVID शुरू हुआ था उस टाइम पे my apartment was more expensive. I was living in a more expensive neighborhood as well. So वो वाली चीज़ें भी cost बढ़ती रहती है ना उसके साथ. So those things did happen. पर I'm right now in Cancun, which I'm not in the hotel zone, so ये locals का area है, so that's why it's a little cheaper. Long term rental लेता तो I think maybe I get this place for $500, कुछ ऐसे होता. But life's good. Mexico is great, man. Like if you Google Isla Mujeres, or if you saw me on Instagram, I did a live stream from Isla Mujeres. Isla Mujeres means island of women. And मुझे जो मतलब कैरेबियन का जो हम वीडियोस देखते हैं when we think the water is like filter, नहीं यार, the water is turquoise blue actually. पूरा जो अलग ढंग से दिखता है. I'll actually add text over there. कहाँ पर text लिख सकते हैं? Create new Insta. So I'm gonna write NNOMADASS and put it down here where the socials are. If you want to follow me on Instagram, so I'll be posting, doing live streams from Vegas. मैंने and यहाँ पर क्या चल रहा है? देखो इंटरेस्ट तो आ गया है यहाँ पर, तो 3 bet ये बंदा इतना डीप नहीं है तो ठीक है. Gonna 3 bet that. ये someone called 7 to 7 is a very good flop. मतलब for the range itself यहाँ पर दिक्कत ही नहीं है. कितना छोड़ा जाए? 25%. ये क्या चल रहा है? Hide user on this channel definitely. अलग ही है मतलब ये. दिस इज मुझे लगता था ये चीज़ें सिर्फ ट्विच पे होती हैं. ओके सो आई एक्चुअली हैड क्वींस ओवर देयर, ब्लैक क्वींस, ये जो बिग ब्लाइंड पे 3 bet करके हैंड खेला. एंड बहुत ही अच्छा बोर्ड था वो तो, स्ट्रेट अप. एंड रिमूव. Tane is here. What's up, buddy? I am great. I did see some updates which we'll talk about in personally. So, holy shit, what is happening over here, man? Report, report, and hide, remove, remove, hide user on this channel.
ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? नॉर्मल जनता नहीं आ रही है, इन लोगों को कहाँ से आना हो रहा है? एंड रिमूव pretty idiotic stuff. Yeah, never mind that. Put user in timeout forever. Mm-hmm. Okay, just gonna move to somewhere else in chat. So we've got a break coming in 5 minutes. तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है. The local time over here is right now what 7 in the morning. पूरी दुनिया उल्टी चल रही है अपनी आज. Navdeep is here and Street Smart raises. So let's see हम क्या करने हैं. चैट स्पैम कर दे बट व्यूअरशिप तो दे रहे हैं ये. नहीं यार, ऐसी व्यूअरशिप नहीं चाहिए. एंड वी रियली डोंट वांट व्यूअरशिप लाइक दिस. It's not even deleting. What the hell? All right. Uh, text logged. Awesome. Any other questions about Vegas or LA? Yeah, content के बारे में. I love talking about content, man. Like, I think I want to be honest, I want to make content like for brands as well. Like, जो अभी कर ही रहा हूँ एक तरह से, but like on a much bigger scale. And not even me in front of the camera, like getting other people in front of the camera. So monotone board यहाँ पर रेस करके आए थे. So यहाँ पर ठीक है 33 कितना डीप है 18 भी ब्लाइंड. So we bet and zero nerve is thinking. And he decides to raise over here. I think with this tax size we have to go with it. And we do. And he calls. He has already the flush. हमें pair up चाहिए था with the ace or a queen. He flopped a flush. That was possible, but our hand was too big to do anything else. Just uh, cooler only. Top two versus straight up flush. लोगों के पास हमेशा होता ही है क्या? मुझे लगा वहां पर एक स्पीड से चक्रेज चक्रेज कर रहा होगा. वाओ मैन, लाइक दिस गाय इज परसिस्टेंट. मैं इसका चैनल में जाके कैसे करूं यहाँ पर? रिपोर्ट रिपोर्टिंग एवरीवन. Am I making content in Vegas alone? No. I have Muskan with me. Muskan's helping me out. I am helping Muskan out. So we've decided हम लोगों को content बनाना है साथ में. तो करेंगे कुछ ना कुछ. And और क्या है? There are other people also who like to make content, like, but उनकी opportunity cost, they're like playing a lot of tournaments, so it's just too high. जैसे नील है, he loves to make content, but the guy is playing every tournament there is. So समझो, I'll try to rope him in for some content. का ही dinner winner चले जाएंगे. तो he likes to make content, that's for sure. एनीवन हैज आइडिया? मैं ये चैट में से ये लोगों को कैसे हटाऊं जो ये कर रहे हैं? आई नो इट्स अ बॉट अकाउंट. आई हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड इट अ फ्यू टाइम्स, बट स्टिल इट्स देयर. Epic Whale decides to check this board. Interesting. I check to you, sir. He decides to check again, and
Okay, I'm gonna bet small and he folds. I had two pairs, but um, 8 and 7. If he decided to value raise his weaker diamond, like it's very tough for him to have the nut diamond over there. So I would have turned my hand into a bluff by re-raising again. तो वहाँ पर चलो उसने वैसे ही फोल्ड कर दिया against my block bet. I've blocked it, man. I've blocked it like several times. This report भी कर ही दिया है मैंने कितनी बार. We've received your report. If we find this content to be blah 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 blah. Should I make it subscribers only chat? Maybe that would help. The bot might not know how to subscribe, but I guess bots are also way ahead in this time, right? Mm, yeah, problem with Twitch and YouTube live streams, man. This stuff. So back to content in Vegas. Muskan and I have decided to make content, a little bit of content together. And I don't want to put myself in a spot where I'm like playing bigger tournaments or playing bigger games, and then I want to do daily vlogs. So ये जो अभी वाली trip है, that is like 12 days of daily vlogs, which I've thought I have a whole team in India which will be helping me out. तो मैं सिर्फ content upload करूँगा. And yeah, I definitely need a new mod, man. That is definitely true. My last mod, guys, understand, my last mod was Juggernaut. And usse pushe na. After he became my mod, the guy went on like a 4 crore heater. So, see, applications and bribes for becoming a moderator on this channel are open. But yeah, you know, for like a higher potential, what happens to your life after you become a mod on New World Poker Nomads? There's some barter that has to happen. I'm just kidding, guys. कोई नहीं, enjoy the show. यहाँ पर मैं modding भी करूँगा, सब कुछ करते हुए सारी चीज़ें ढंग से करेंगे. एंड जो डेली व्लॉग में मेहनत माल में क्या लगने वाली है एसेंशली लेट्स से आई वेक अप एट 9 in the morning and then I document till 9 at night, which would be somewhere around 8 9 in the morning for India time, and I want content to go out like somewhere around 11 12, which I think is the good spot so that पूरे दिन में visibility हो. So my team only gets like 3 4 hours to edit it, and until I trust them fully कि भाई जो तुम बनाओगे I'll be fine with putting out. So this I've been working with the same team for like what now 2 years. मैं जब एक बार मेक्सिको से जब स्ट्रीमिंग और कंटेंट बनाना शुरू किया था तो आई वाज यूजिंग द सेम फ्यू पीपल एंड अब एक दो लोग तो और बड़े हैं बट नाउ आई ट्रस्ट देम इनफ वेयर आई एम लाइक हाँ थोड़ा मैं बेसिक स्टोरी लाइन अगर मैं समझा पाऊँ दिल प्रोजेक्ट व्हाट इट इज आउट एंड कंटेंट बना के ये भी सिखाए यार यू कांट डू एवरीथिंग लाइक परफेक्टली थिंग्स विल गो लाइक हर चीज़ परफेक्शनलिस्ट नहीं बनना है कंटेंट में and so they'll be putting out the content, they'll be uploading it while I'll be sleeping. You guys will see it probably जब तक तुम सब देख लोगे, then I'll wake up and then next day का content shoot शुरू हो जाएगा. So the team will be working in India, the team I'll be working over there. The whole process, logistics of putting the content up on Google Drive and giving to them. अब Google Drive भी I have a Google Drive which has much more data. I have a paid subscription of Google Drive, so it's easier. We use it as a office drive to move data around. So yeah, without my team, I don't think I can do it. There's no short daily vlogs. ये कुछ लोग Flying Beast मान लो या Casey Neistat बनाओ बोल दो. They're like huge YouTubers जो 3 4 million subscribers हैं उनके and वो अभी भी अपना करते हैं edit. But I just don't think like playing and ये सब करते हुए हो सकते. You don't know when you're going to bust a tournament. रात के 11 बजे तक मैं tournament में बैठा रहा तो edit कब करने वाला हूँ. So वो सब दिक्कत है. So there's a whole team which is involved. Like you see my face, I get all the like praise for making content, but there are people behind who do a great job. Krishanu Deka, I'll name him out. He runs a poker channel called Poker Bounty. Makes documentary type of content. Has close to like 25K subscribers.
ही इज देयर. देन उज्जवल मेरे गोवा के ट्रिप में देखा था, ही इज माय कजन, एंड ही इज अ ग्रेट आफ्टर इफेक्ट्स गाय. तो मतलब प्रीसेट नोशंस, अगर मुझे प्रीसेट्स कुछ चीज़ चाहिए ही कैन मेक इट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. Am I going to ask Negrano how to create good content? Negrano तो भाई उसकी भी लेजिट पूरी टीम पीछे लगी हुई है, तो वे आर ट्राइंग टू एमुलेट नेग्रानो, राइट. ही इज द ओजी ऑब्वियसली. पिछले कितने 5 सालों से तो भाई डेली व्लॉग लगाया जा रहा है, एंड ही इज प्लेइंग 100 केस. मेरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट विच आई थिंक आई एम प्लेइंग while I'm daily vlogging is 1500 monster stack, and I think I'll play it twice if I bust once. तो या 1500 और 100 के में थोड़ा सा फर्क होता है. जैसे आज हम स्पार्टन पे 1650 रुपए का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लेकिन अर्जुन लाख रुपए की बाइन भी खेलेंगे. तो डिफरेंस होता है ना प्लेयर्स में. बट या द गाय इज अमेजिंग फॉर पोकर मैन. डैनियल नेग्रानो डेफिनेटली द केस. एंड दूसरा फेज इज लाइक द यूट्यूब पर्सनालिटीज फॉर पोकर. क्या यूट्यूब व्लॉगिंग ने कोविड के टाइम, आई गॉट टू नो रिसेंटली देयर इज द बिगेस्ट यूट्यूबर फॉर पोकर इज एक्चुअली जापानीज, एंड आई हैड नेवर सीन हिज कंटेंट, एंड उसके 700 के सब्सक्राइबर्स के आसपास हैं. सो दैट गाय केम टू प्ले इट लाइव विद द बाइक और समथिंग, एंड पूरा मतलब अल्टीमेट. ही मेक्स कंटेंट इन हिज जॉनर. आई वांट टू मेक कंटेंट इन आर जॉनर, जो है हिंदी में ज़्यादा बनाना चाहता हूँ मैं, ताकि वाइडर ऑडियंस को दिखे. सो या आई लाइक मेकिंग कंटेंट, एंड इट्स नॉट लाइक कल से स्टार्ट हुआ. मुझे पहला डिजिटल कैमरा 2002 में मिला था, एंड आई स्टिल हैव लाइक things which I shot with it from 2002, 2003. So yeah, I always liked doing it, and putting it out started pretty late, like 2017 में मैंने शायद अपने travel content थोड़ा बहुत edit करके डालना शुरू किया था. एंड दैट वाज फॉर सेल्फिश रीजन. आई वाज लाइक इतने सारे मतलब वीडियोस जीबीज डेटा की जगह मुझे एसेंशली एक मूवी टाइप की बना दो अपनी ट्रिप की, एंड आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब एंड सी हाउ इट इज. सो लेट्स सी. और क्या. उत्सव फॉर मॉड. हाँ, उत्सव के पास देखो बहुत काम है अर्जुन. तो तुम्हारे पास लग रहा है कम काम हो रखे हैं, लेकिन उत्सव के पास बहुत सारे काम है, ये मुझे पता है. 11 bigs with this hand. I think when one person यहाँ पर नहीं है, तो I'm one lead position. I've shoved over here, and plus EV सोच रहे हैं, मामासीता सोचेंगे, स्ट्रीट स्मार्ट एंड प्रमाण. लोगों पे नोट्स भी हैं थोड़े बहुत मेरे, and street smart fold and Praman. I had ace 4 of diamonds. Pick up हुआ थोड़ा वहाँ पर. Oh, I'll tell you about a new mistake I made, man. This is what's the tournament? Let me remember it properly. It's a 65K Goa tournament, and मेरी टेबल पे मायरन बैठा हुआ है, आशीष आहूजा बैठा हुआ है. There were other good players as well. नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़े लोगों के. Dirty was on my table, Pawan was on my table, so it was a pretty reggy table. So उसी की वजह से मैंने थोड़ा हाई वेरिएंट स्पॉट ले लिया था कि पावन के एमपी ओपन पे मैंने कट ऑफ से स्पेकुलेटिव हैंड, एमपी भी नहीं, आई थिंक हाईजैक ओपन पे कट ऑफ से मैंने किंग क्वीन ऑफ डाल दिया था, लाइक 17 बिग्स. And he's like, against you my friend I cannot fold, and he shows ace queen. I was like, ये किसके against fold करते हो, ये भी बता दो. And yeah, he held, and then I was pretty short, was down to like 3-4 big blinds, and 3 big blinds or so, हाँ. And then I had like a few turns, right, जब तक मेरी blinds आए, and
I essentially made a mistake of not putting my chips in under the gun क्योंकि अगली big blind पे मेरी blinds और antis दोनों जाएंगी. And you should have seen Myron's face. He was like, how could you? Like I had a very shit hand, but like I forgot कि अगले hand में big blind और anti दोनों जानी है, मतलब दो big blind जानी है. And I had like 2.5 big blinds. So most hands go. I think I had 7-3 over there, but still like I it completely skipped my mind वहाँ पर. And I was still like, हाँ, I can still get a better hand. Like I'll get a better hand 95% of the times in 7-3. उस सिचुएशन में लाइक मिस्टेक करी थी मैंने. एंड wow, that was like, ये क्या कर रहा है in a high roller, I'm doing this, what the hell is this? So that was pretty embarrassing, but learning experience. मैं वहीं पर बोल दिया, oh shit, ये learning experience थोड़ा महंगा हो गया है. उत्सव लाइक 4 करोड़ के हीटर के लिए आई डोंट माइंड मॉडिंग. आई एक्चुअली मेट जगन्नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन गोवा ओनली. And Aniket Wagmare, and such a cute boy, I'll say. Oh my goodness, he does not love. I had to teach him like things to do with your money in the poker industry and what not to do. Don't lend people money. Like I had to put it in him, bro. Just don't. तो काफ़ी चीज़ें मज़ेदार. आशीष आहूजा stayed with me, and then Aniket stayed with me. Another friend Rachit stayed at my place. So हमने एक Airbnb भी ले रखा था वहाँ पर, a 3 bedroom Airbnb, क्योंकि मैं वहाँ भी content बनाने गया था. I got the opportunity to make it in one place a little bit. बाकी और जगह मिला नहीं, so we just made travel content. तो हमने बोला ठीक है. I got to commentate PSL में. तो वो सब चीज़ें हुई. या वो अ वेरी बिग नूब मिस्टेक. ये लाइव खेलते हैं. अरे यार एंटीज, बिग ब्लाइंड एंटीज में it just skipped my mind. मैं वहीं पर वो the thing was, did I want to take this spot against Pawan? वहाँ पर डालना चाहिए था मुझे कट ऑफ में किंग क्वीन और ये सब. And Dhaval was on the button behind me, and Dhaval said if you had folded I would have put queen jack in. And he would have made us straight. That's why he was more angry at me कि कमीने तूने किंग क्वीन डाल के उसको जिता दिया. मैं क्वीन जैक डालता, मैं स्ट्रेट लगा देता. And मैं it was pretty reggy table. You see, right? Dhaval sitting there, Pawan, Ashish Ahuja, किसी और का भी नाम लिया था मैं, Myron, and it was a pretty reggy table. तो वहाँ पर मैं सोचा हाई वेरिएंट स्पॉट ले ही लेते हैं. कोई नहीं, अब यहाँ पर बस्ट हो गए तो वैसे भी टेबल इतनी मुश्किल है कि it's tough to gain chips, so might as well take the thinnest of spots. I thought it was all right at that moment, but things did not work out. Do you want to hear an even better story? Like I thought I'll save this story for a video, but since we are streaming and we need content, okay. I have a very good friend, a poker friend, but he does not play poker professionally. He's a businessman, and यहाँ पर पहले मैं इस स्पॉट में 9 बिग ब्लाइंड के साथ क्या करने वाला हूँ. सो ही इज़ अ बिजनेसमैन. ही कम टू गोवा एंड ही इज प्लेइंग टूर्नामेंट्स, राइट. एंड मैं अपनी टीम के साथ था, एंड आई एक्चुअली वेंट टू दैट डे एग्जैक्टली वाज द डे ऑफ अ 100K टूर्नामेंट इन गोवा. यहाँ पर मैं फोल्ड कर रहा हूँ. So I'd come to Goa, and I was going. I went to Abhinav Iyer's house. Abhinav lives in Goa, and I asked him if he had monitors. And of course, the guy has like so many monitors. He's like, हाँ शायद 3-4 monitor पड़े हैं, ले जा ले. And when I reached his place, there were like 3-4 curved monitors, like nice big ass monitors जो मेरी video team देख के मतलब डर गई थी कि भाई ये monitors इन्होंने ऐसे fake रखे हैं. So I think after this hand I'll continue with the story क्योंकि I think I might want to get interested over here, and we are going in, and जैसी अगर किसी की कॉल आती है we will show the cards. He reshoves, street smart is going to be folding. I have him dominated, and yeah, we win with the ace king of spades.
So I reach Abhinav Iyer's place. Huh? This is the whole story. I'm giving you the full laydown. So I played like the starting few tournaments, and I don't intend to play the high roller. It's a 100K buy-in, tax associated, all that thing. And I was like, content बना रहा हूँ मैं, travel और बाकी चीज़ का content बना सकता हूँ. तो I go to Abhinav's place and I enter and there's the whole crew. पूरा ये लोग poker go और poker go भी नहीं. They were watching like learning poker content of like good poker players, like subscription based content. So they were watching, and I get in there, and I see Ashish Munot is there, Laksh is there, like the whole India के अच्छे अच्छे players जो बैठे हुए हैं. And I went with a friend of mine, and मैं बोला, hey, Ayyar, I needed like a few monitors. He's like, हाँ वो रखे हैं, ले जा ले. कोई नहीं. And then he's like, I'm seeing you a little later in the high roller, right? I'm like, no bro, I'm not playing the high roller. Like Vegas जाके खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. And यहाँ पर अपनी टीम आ रही थी, तो टीम के साथ काम करते हैं. And so I just pick up the monitors and I head home. And this is like 2 in the afternoon. 2 बज रहे हैं शाम दिन के. एंड मैं अपनी कार में लेके घर पहुंच गया. वी आर सेटिंग अप अपना पूरा सेटअप की 2-3 मतलब मैं सीपीयू वीपीयू तक ले गया था ना, तो सेटअप अपना लगा रहे थे वहाँ पर, कहाँ से कौन कहाँ एडिट कर सकता है. एंड ये सब चल रहा था. सो आई एम होस्टिंग माई फ्रेंड एट माई प्लेस. मेरे दोस्त जो आ रखा है, जो पोकर खेलता है लेकिन बिजनेसमैन है. तो वो मुझे ऐसे बोल, मैं घर पहुंचता हूँ अपनी टीम को बोलता हूँ, मैं ये मॉनिटर वॉनिटर लगाओ, अब सेटअप शुरू करते हैं. वो ऐसे बोलता है, तू चल नहीं रहा है खेलने? मैंने बोला नहीं यार, मैं नहीं जा रहा खेलने, मैं यहीं पर रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू जा खेल क्या. बोलता है, ब्रो यू आर किडिंग राइट? मैं बोला नो आई एम नॉट किडिंग, मतलब इट्स अ 100K बाय इन, देयर इज टैक्स एसोसिएटेड एट सोर्स कहीं कहीं पर. सो आई जस्ट डोंट थिंक आई माइट बी, मतलब यहाँ पर मुझे खेलने का नहीं है एंड मुझे काम भी है. सो ही इज लाइक, यू आर किडिंग राइट? मुझे वैसे मैं बोल रहा नहीं नहीं, आई कैन अफोर्ड इट बट डजंट मीन आई स्टिल हैव टू प्ले इट. बोल रहा है नहीं ब्रो. ही इज लाइक, कम ऑन मैन, मैं जा रहा हूँ, आई नो आई एम लाइक a huge underdog but I am still going. I'm like, you're going for the experience, मजे करने के लिए जा रहा है, खेलने जा रहा है. So he's like, नहीं नहीं, you have to play. I was like, नहीं भाई, मैं नहीं खेल रहा हूँ. He's like, okay, give me a number that I'll put you in. I was like, देख, it's not worth my while कि मैं तुझे बोलूँगा कि give me 20% and you keep 80%. So let's not talk about it only. कि मतलब it's not worth my time going and playing for 20% of for me. And so he's like, you choose the number. I'm like, why do you want to get scammed? Like, I'll say a number and you will just agree. And he's like, do you think I really care about the money? So the guy is like super loaded. Like 1 lakh is pennies to him. मतलब मेरा 10 रुपए उसका 1 लाख हो सकता है. Yeah, मेरा 1,000 रुपए उसका 1 लाख हो सकता है. Probably. Yeah, that might be true. तो he's like, चल खेलने, I'll put you in. And funny enough, मेरा एक प्लेयर जिसको मैं बैक कर रहा हूँ, he'd also come to Goa to play. And I don't stake him for tournaments. तो ही वॉज लाइक, मुझे बस खेलने आना है, जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट होल जो पिछले 5 महीने में सेम ग्राइंड चल रही है, एक लाइव सीरीज खेलने का मन है. एंड ही इज लाइक, स्टेक मी एंड नो मेकअप सॉर्ट ऑफ डील. द गाइज मेड मी गुड मनी, सो आई वाज लाइक, ठीक है यार, तेरी एंटरटेनमेंट कॉस्ट के लिए आई पुट हिम इन लाइक द मेन एंड द साइड इवेंट्स अ लिटिल बिट. एंड आई गेव हिम अ वेरी गुड डील. आई विल नॉट टेल यू द एग्जैक्ट डील बट वील कम बैक टू इट लेटर. तो ये मुझे बोलता है कि ये नंबर ऐसा है. सो आई वाज लाइक, ब्रो इफ आई टेल यू 60-40 विल यू अग्री? ही इज लाइक, या आई डोंट केयर. एंड आई एम लाइक, मेरा जो एडिटर है ही नोस पोकर, सो ही इज लाइक, ये क्या चल रहा है यहाँ मजाक, ये 60-40 बात चल रही है 1 लाख के बाइंड टूर्नामेंट में फ्री रोल के लिए. एंड ही इज लाइक, ये कहाँ से मिलते हैं तुम्हें ऐसे लोग? एंड I'm still telling him, bro, this is like you're outright getting scammed. There is no shot I am like that plus EV or anyone is that plus EV कि वो जीत सकता है इस फील्ड में ऐसे नंबर्स के साथ. मतलब he's like, bro चल ना, क्यों तू ये मुझे ज्ञान क्यों बांट रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, चल. एंड मैं बोला like this is तो फ्री मनी. बोला ठीक है चलो. So we go there. We start playing the 100K high roller and our man, मेरा दोस्त,
हिज प्लान वाज, मैं देख 2 बुलेट फायर कर ही रहा हूँ वैसे भी, तो उसकी जगह 1 बुलेट तू फायर कर ले, 1 बुलेट मैं फायर कर लेता हूँ। देखो मैं पहले मुझे बता भी दो, ऑडियंस है यहाँ पर या सब भाग गए? इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। तो ही इज लाइक या 1 बुलेट तू फायर कर ले, और देन ही गोज देयर एंड ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग एलआईटीज। तो एलआईटी से तो समझ ही रहे हो क्या होने वाला है। मैं देख रहा हूँ मेरी टेबल, अगर मैं बताऊं, माय टेबल वाज कंचन, प्रिलॉप्स, सिद्ध कृपलानी, एंड व्हाट्स हिज नेम, एक और बंदा है। It's a pretty good, like very reggy table. Neil Joshi came to my table. He busted. Then Niharika Bindra was on my table. It was a full reg table. But उससे मजेदार टेबल मैंने शायद एक हाई रोलर में नहीं खेली है। लाइक वी प्लेड, आई प्लेड लाइक इन 3 राउंड्स। यहाँ पर 3 बेट कर दिया है, चलो छोड़ जाने दे रहा हूँ। मैंने मतलब, अब आशीष बोलेगा ये निट ऐसे कैसे बोल रहा है। तो इन द फर्स्ट 2 hours I played 7 4-bet pots, like where I was the 4 better, be it like opener and um, opener and 4 better, or like cold 4 better. तो इट इज जस्ट द मोस्ट ऑफ अमेजिंग टेबल। मतलब बहुत एग्रेसिवली खेले। मुझे कृपलानी भी वो ऐसे बोला है, मैंने ऐसी टेबल बहुत टाइम से नहीं खेली है कि लाइक नो वंस वरीड। मैं तो हाई वेरिएंस ले रहा था। आई वाज लाइक सी फर्स्टली इट्स अ फ्री रोल फॉर मी, एंड इतनी रेगी टेबल आ गई है तो यो लो, मतलब आर या पार, घर जाएंगे जल्दी वरना स्टैक बनेगा। एंड पूरा ये चल रहा था। एंड ये भाई इधर अपनी एलआईटीज चल रही हैं इनकी, 1 बुलेट बाहर। मेला ओ अनलकी मैन, यू बस्टेड, चल घर चले जा, आई विल ब्रिंग आस्क माय ड्राइवर एंड ही विल पिक यू अप। ही इज लाइक आर यू क्रेजी? ही गोज स्वाइप्स कार्ड, सेकंड बाइन। ओके कोई नहीं। तो मेरा स्टैक चल रहा है ठीक ठाक। आई एम ग्राइंडिंग, लाइक ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहा है। थोड़े बड़े पॉट्स के लिए आई थिंक आई गॉट ब्लफ्ड इन अ ह्यूज पॉट बाय वन ऑफ द कैश रेग्स। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट ही इज लाइक सुपर एग्रेसिव। I'm definitely forgetting his name, but अपना I'll come back if I remember his name. I'll tell you. And I'm like ठीक है चल रहा है, ये चल रहा है। He comes on second man and I'm like pleading. मेरे टेबल में मैं एक हैंड मिस तक कर दिया कि उसे बोलने के लिए, ब्रो यार यू डिसाइडेड कि 2 बुलेट्स तू फायर करने वाला है, उसके बाद तू खेलेगा नहीं, सेकंड बुलेट इज एसेंशियली इन्वेस्टिंग इन मी। लाइक मैन चिल ना, क्या जिंदगी, क्या दिक्कत है? मैं बोला इट्स 1 लाख। ही इज लाइक इट्स 1 लाख एग्जैक्टली। उसका कहना है कि ये 1 ही तो लाख है। ठीक है, ही बाइज इन सेकंड बुलेट। एंड जो फर्स्ट बुलेट थी, तो फर्स्ट बुलेट में ऋत्विक और इन लोगों के साथ खेल रहा था। तो मैं वो ऋत्विक पे जाके बोलता, यू लाइकिंग माय फ्रेंड ओवर हियर राइट? इज लाइक कुछ तो चल रहा है। Because he was playing everything, every card, whatever you 3 bet, he's going to call. So he comes in the second bullet on the same, I think on a different table. He busts the second bullet as well, and now he's like down like 4 5 LITs. So then he busts, and then I go to again to him. मेरी table तो ठीक ही चल रही है। I'm like, bro, क्या सीन? अब तो घर जा रहा है? He's like, bro, chill. I'm like, क्या करना चाह रहा है तू यहाँ पर? मैं तुझे 100 बार बोला हूँ वेगस आ जाया कर, 1 हफ्ते के लिए वेगस में करेंगे ये सब कुछ मजे। बोला ब्रो आई जस्ट इट्स फन, लेट मी। मैं ऐसे देख रहा हूँ यार, ये मतलब क्या कर रहा है? बोल रहा है ब्रो आई डू इट वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, इट्स ऑल राइट, आई डोंट माइंड इट। तो ठीक है, ही इज इन फॉर हिज थर्ड बुलेट नाउ। मैं ऐसे बोल रहा यार, मैं अगर नहीं आता तो शायद ये सेकंड बुलेट फायर करता और फिर छोड़ के वापस आ जाता। तो आई डिड आस्क हिम द अदर डे, ही इज लाइक वो 2 बुलेट तो मैं तुझे लाने के लिए बोला था। सो नाउ ही इज इन फॉर 3 बुलेट्स, आई एम इन फॉर फर्स्ट बुलेट इटसेल्फ। एंड मेरी टेबल बहुत रेगी चली, एंड माय टेबल इवेंचुअली ब्रोक। आई मूव टू अदर टेबल, एंड अब हम पहुंच चुके हैं समवेयर अराउंड लाइक 60 पीपल, and I lose a big pot, and now I'm the short stack. मेरे पास now with like 35 people odd paid, um, 45 people are remaining, and I have 6 big blinds in the big blind. And यहाँ पर Sajal opens a guy flats, I 3 bet shove ace queen, Sajal reshoves jack 10 suited,
टाइप का हैंड एंड no, this was the one, right. So I start building up, and अचानक से 46 remaining where I was the short stack, and he was still in the field, right? उसकी third bullet थी, लेकिन ये डे 2 की बात पहुंच गए, हम डे 2 भी पहुंच गए हैं, पर अंडरस्टैंड कि डे 2 पहुंच गए हैं, हम लोग वापस आए, अब वो होश में है थोड़ा कि हाँ चलो बैग तो कर लिया है मैंने, एंड वी कम बैक। यहाँ पर भी रेस कर सकते हैं इसे, मैं ये बोल ही दिया हूँ कोई टेबल पे होगा मतलब वीक हैंड है यहाँ पर। स्मॉल ए सूटेड था, ये 7 क्लब्स नहीं, चलो छोड़ो। तो नाउ आई एम ऑन द क्लोज टू द बबल, आई गिव अ बैड बीट, आई गिव अ बैड बीट, now I'm forgetting the name who I was gave a bad beat to. He won the main event and the high roller as well in Goa. He's from Bombay. Cash game reg, a very good guy. We had I'm forgetting his name, man. How am I forgetting his name? I played a decent bit with him. अरे यार, अच्छा पहले ये वाला हैंड कंप्लीट कर लेते हैं। डूस 9 ऑफ सूट से कॉल करना पड़ जाता, पर ठीक है, डूस 9 अहेड ही होता और हार जाता। ठीक है, सो आई गिव हिम अ बैड बीट वेयर आई पुट इन लाइक किंग 9 टॉप पेयर में चेक शव कर देता हूँ मैं फ्लॉप, एंड ही हैड टेंस एंड आई टर्न द 9। तो बबल चल रहा है, नाउ आई एम चिप लीडर। वो उधर से पैदल पैदल चल के आता है अपने इन्वेस्टमेंट की देखने के लिए, बिकॉज ही न्यू आई वाज शॉर्ट, आई वाज इंस्टाग्रामिंग ऑल्सो ऑब्वियसली। तो वो आता है एंड ही इज लाइक अच्छा आईटीएम के लिए ना थोड़ा टाइट खेलना। मैंने बोला ब्रो मेरे पास सारी चिप्स हैं, एंड ही लुक्स एट माय स्टैक एंड ही इज लाइक ये क्या हो गया ब्रो। So all of a sudden he has like dollar signs in his eyes. He's like ये तो investment काम कर गई। So and Ashish came to my table उस time पे and ended up playing। मैं काफ़ी मतलब फिर काफ़ी aggressively bubble में खेल ही सकते हो, right? 1 लाख का tournament में अगर bubble चल रहा है तो people let's say don't fight out that much। तो वहाँ पर मेरा पहुँच गए, अब ये stack भी बन गया है with like 18 people remaining। Also I have a decent amount of chips। Then our table actually breaks। Ashish goes to Karthik's table, and I go to Zarwan's table, and some other guy who's pretty shady. Might his name might be shady as well। ठीक है, तो I like to be really honest. In the 1 hour I was there, I think we played 1/3 the hands the other table played. He was tanking so much. Like there was a hand where he raised, a guy shoved 25 bigs, and he tanked 3 minutes. I called Neil as the clock, and then he's looking at his hand, and I see his hand. It's 8-9 of hearts, and he's saying, "क्या gamble कर लूँ तेरे साथ?" And the guy who shoved he came second, I think, to Zarwan। He looks a lot like Virat Kohli. So he's like talking like that. I'm like, what are you wasting my time for, man? तो अगली बार से मैं सीधे बुलाया जा रहा था। It was just irritating कि I just got shorter and shorter because the blinds were increasing and hands मतलब ना मुझे ऐसे मतलब I got to play at least like 1/3 of the hands, and पीछे like with this was like with 11 players remaining, my friend Bus, he cashes for like 4 lakhs, so he made a profit on his 3 lakhs as well। And then he's standing behind me and I'm showing him all the hands। I'm like ये कचरा ये कचरा ये कचरा, and इतनी हल्के चल रहा है कि बोर हो रखा हूँ मैं लिटरली वहाँ पर। I finally get like 12 bigs and 4-handed में वहाँ पर I get it in against ace king obviously and dead, and I busted 9th। पर इस पूरी सिचुएशन की कहानी अभी मजेदार पॉइंटर आने वाला है। सो वी गेट बैक होम, प्रॉफिटेबल डे मतलब बोलने के लिए कि हाँ भाई एक का 5 हो गया है एंड 3 का 4 हो गया है, ऐसे लाइक प्रॉफिट लाइक 5 लाख स्ट्रेट अप प्रॉफिट उसका। सो आई एम लाइक ब्रो या सो योर दिस इज योर चॉप मतलब सो इज लाइक या कितना होता है मेरा 40% तेरे नेट प्रॉफिट का, बिकॉज आई हैड ऑब्वियसली पेड फ्रॉम माई बाजी बैंक रोल राइट, तो वो तो हटा ही देना था। एंड आई एम लाइक नो ब्रो 40 तेरा नहीं था, 40 मेरा था, बिकॉज दिस वॉज द एग्जैक्ट सेम डील आई हैड गिवन माई हॉर्स जस्ट फॉर लाइक हिम टू हैव फन प्लेइंग लाइव टूर्नामेंट्स, जस्ट फॉर
like change of pace for his poker. He was bored out of playing one kind of poker and wanted to play, like wanted to come out for a live series, meet friends. That was. तो मैं उसे बोलता ब्रो नहीं नहीं 40 मेरा था 60 तेरा था. Like understand a guy who's not even sure कि उसका 40 था या 60 था. वो मुझे स्टेक किया and I ended up running deep, finishing ninth. Of course अगर first prize आ जाता तो मतलब would have been great. Would have been a much better story, but from not playing, मुझे जैसे अय्यर ऐसे बोलता है अभी तो बोल रहा जैसे डे वन पे की अभी तो बोल रहा था खेलूंगा नहीं. हाँ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दोगे. मैंने बोला यार यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम हियर. तो the whale might be in the chat as well. Holy shit. Good timing, Mr. Whale. So I think this made up for a good story and a good entry by you as well. So ladies and gentlemen, if you need to enter into tournaments which are like high buy-in and need a free roll, the man is here in the chat. क्यों बोला है बेस्ट लाइव मतलब चैट पे ये कहानी सुनाने की बात जरूरी नहीं थी पर मोह में मैं बह गया. So yeah, it was pretty sick story. Sick 2 days. मतलब मेरे एडिटर लोग और ये सब बोल रहे हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए कुछ भी कहीं because they're not from like the core high stakes poker scene ना. तो मतलब when you यार 1 lakh has a lot of relevance. 1 lakh's a lot of money. Like 10K is a lot of money. मतलब 10K can do a decent bit of things in India. तो मतलब वहाँ हम ऐसे बात कर रहे हैं कि फ्री रोल हो जाए 1 लाख का और ये that was pretty fun. Yeah. And funny enough, in the main event, we busted 99 and 98 as well. So bagal mein. We both cashed the main. Obviously, me on my first bullet, I think first or second bullet, and him only his fourth. But who's counting, right? So how did you guys like the story? There is no delay, so I can straight up see your replies. अभी देखता हूँ कोई भी शायद chat पे ना बचा हो, सब लोग भाग गए. But no, we're still holding strong at 25 people here. So it was a really long story. I'm not the best storyteller apparently. Could have made it more precise and more fun. But yeah, that is one of the fun recent stories about poker and playing live. अभी वेगस जाके और तो बननी है कहानियाँ. So yeah. By the end of it, we are 2:1. ये क्या है 2:1? क्या बोल रहे हो तुम? वैसे you're right now in Thailand, right? Vacationing कर रहा है तो भाई क्यों स्ट्रीम व्रीम क्यों देख रहे हो? घूमो फिरो. अबे यार अंडर द गन में ये फोल्ड करना पड़ेगा. मुझे हैंड्स आ नहीं रहे हैं. मैं कहानी की वजह से खेल नहीं पा रहा हूँ. मुझे लग रहा है मैं कहानियों में बह गया हूँ. Let me see what else is gonna be running on Spartan. वेगस मेन इवेंट की स्टोरी सुननी है तुम्हें? वीडियो फुटेज तक है मेरे पास. वीडियो फुटेज गूगल ड्राइव पे पड़ा है, मैं दिखा सकता हूँ. दिस इज डे 4 ऑफ द मेन इवेंट. वीव कैश्ड एंड मिन कैश से ऊपर चले गए. सो देखो इंडियंस का क्या होता है कि मिन कैश होती है $15,000. इफ यू बस्ट एट दैट मोमेंट यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस क्योंकि टैक्सेस इज 5K प्रॉफिट्स एंड अबव. So now we passed the point where 5K, 15, 16K का पे आउट आ गया. ये 40 बिग ब्लाइंड कैसे शव कर देते हो यार अंडर द गन के अगेंस्ट. ठीक है फोल्ड. अच्छा तो स्टोरी की बात करता हूँ. उसके बाद मैं क्वेश्चंस में जरूर आऊंगा. कुछ लोगों के क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे. अच्छा ये इसके पास क्या था? ये एस किंग इसने सीधे डाल दिया बस. गजब है यार यंग प्रिंस पे. हाँ सो डे 4 में आई थिंक ये स्टोरी मैंने पहले ही बताई है. एंड लाइक द सिचुएशन इज इट्स ओपन 3 बेड. ओके 4 बेड शव. मेरे पास एस किंग ऑफ स्पेड्स. द गाय हैज क्वींस व्हाटएवर. रोमित इज सिटिंग ऑन माय राइट. essentially seat he's seat 7 and I'm seat 8 something around that. Yeah, I'm seat 7, he's seat 6. एंड यहाँ पर 5 है तो नहीं शव होता है. ठीक है तो बोर्ड कम्स किंग. आई हैव एस किंग ऑफ स्पेड्स. यहाँ पर डू सेट ऑफ फोल्ड कर रहा हूँ.
Uh, board comes king of hearts and two spades. And my opponent has queens with no spade. So my opponent is now drawing to one out because the queen straight is not alive. Turn is a brick. Flop pe Romit is like, how good do you run, man? Like, holy shit. I'm like, bro, there is a thing called turn and river in poker. इतने सालों से खेल रहे हो क्यों मेरे साथ मजे ले रहे हो? And I had also, अरे यार ये साइको नॉट है पर ये थ्री बेट है. Um, and obviously, the river was the non-spade queen. And so I busted the main event in that fashion. But you understand when the money went in, it was ace king versus queens flip ही था. But after you flop like top pair nut flush draw and have him drawing to one out, busting over there is pretty rough. थोड़े लोगों के और questions आए हैं. आगे why do you play Omaha on stars? You play Super Nitty. Thanks, man. Thanks. Why I play Super Nitty PLO? There can be a lot of reasons. Rake can be a reason. The other reason can be people. Either I am there to make like star points, like मेरे को VIP level में रहने के लिए rake back ले उसमें भी हो सकता है वो चीज़ हो सकती है इसलिए आ सकता हूँ. So yeah, there is that. But this is the Spartan stream, so we're going to be mostly talking about the Spartan IOPC tournaments. And IOPC के बजाय यहाँ पर किसी को अगर कैश भी खेलना हो तो खेल सकते हैं. IOPC में तो थोड़ा एक्शन बढ़ता ही होगा. Wow, shots fired, Devik. I get it. I get it. You want to play heads up? Just let me know sometime. And अगर एक बंदा आके टेबल let's just leave it for some other day discussion. And इस 4 ने straight लगा लिया. So कभी मेरा इसमें hand आएगा क्या यहाँ पर? Alright. यहाँ पर कितने big blind है मेरे पास? So with 9 big blinds, we are going all in with this hand. And guys, like to be really honest, do I really care about like these buy-ins which I'm playing? I wanted to stream and showcase a lot of. I have sevens, black sevens, and the club is alive, so I win with the 7 of clubs. So it's moreover me here because I like to make like content and talk to people on stream. And दिखाना चाहता हूँ. I want to showcase the good amount of tournaments there are from small buy-ins to big buy-ins which you can play on IOPC. And yeah, I want to chill out with friends. High stakes tournaments, dikhana. There's downsides and upsides to it. So yeah, we're just chilling over here. We're having fun just by playing essentially. यहाँ पर अब मैं optimally खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा हूँ. It's all good. Divik, not a question which I wouldn't want. Another question I wouldn't want to answer over here. अरे कल की परसों की स्टोरी. जैसे डैनियल नेग्रानो ने अपना पहला वीडियो अपलोड किया and I ended up commented while it was premiering itself, and somehow he saw that comment, like his team probably saw that comment and pinned it. तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा कमेंट किसी ने पिन किया and then I'm like getting random likes. तो forever now on Daniel Negrano's 2022 vlog number 1 सबसे ऊपर कमेंट दिखेगा न्यू वर्ल्ड पोकर नोमैड्स का. The guy is a huge asset to the poker community. And वापस आ गए हैं ये. इनको करना है रिमूव. रिपोर्ट भी. एंड यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस तो आप आराम से तोड़ रहे हो यार बॉट. Any other questions you guys have? मेरा मोटा मोटा प्लान इज द टूर्नामेंट्स. मेन है. Before the main, I will be majorly playing sit and goes, which I do. I think they are profitable, very profitable. They've at least been to me, so yeah. And इसीलिए जो ये वाला फर्स्ट ट्रिप है जिसमें
6 to 14 मैं वेगस रहने वाला हूँ, तो दैट्स व्हेन आई एम प्लेइंग टूर्नामेंट्स and I'm trying to get back on 22nd. So agar for knowledge to people who will be going to Vegas down the line in the years to come, 22nd is the tournament which is seniors event. So there are certain spots during the series also where you really want to be there. India वाले तो क्या होते हैं, जाते हैं तो पूरा महीना ही रह जाते हैं, but जो internal US में या जो पास में होते हैं, people come and go. कुछ की लोगों के घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ होती होंगी, सो सीनियर वीक इज लाइक द वीक यू वांट टू कम वेरी ऑनेस्टली, एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई द गेम्स आर मच बेटर, एंड देन यू वांट टू कम अराउंड, क्योंकि कोलोसस भी उसी टाइम उन्होंने कर दिया है, सीनियर वीक भी उसी टाइम कर दिया है, प्राइस पॉइंट लोअर कर दिया है, तो पीपल कम आउट, पीपल प्ले, एंड देयर इज मच मोर लेट्स से recreational players who are playing over there, and they're having fun, man. Like I've seen poker players जो miserable हैं, 20 दिनों से मरा रहे हैं, and these recreational people are losing and they're loving it because it's an experience for them, they can afford it. And वहाँ रेग सोच रहा है, अरे यार ये वो, so and son. I met so many people, like I played with a guy who's like close to 96, he said, I think. वो बता रहा था, मैं 1960s में जब मैं यहाँ वेगस आता था, मेरे पास मर्क्यूरी की एक तरह नाम की एक कार हुआ करती थी, एंड ही इज लाइक इट वाज डिफरेंट बैक देन, 1960s 70s में आता था, बोल रहा था. So people enjoy, man, people enjoy the game, and it's such a good social game. Like yeah, a lot of people, not a lot, like a few people play it professionally, and yeah, they do have to play it like more responsibly than the other person who for him the result doesn't matter, like unless it's a very big score, his life might not change and he's loving the moment being there. इसीलिए मैं तभी भी बोलता हूँ, जैसे गोवा में भी आई मेट अर्नस्ट एंड यंग के, आई थिंक इन्वेस्टमेंट डिवीजन के हेड को ड्यूरिंग वन ऑफ द गोवा टूर्नामेंट्स, एंड ही वाज वेरी ऑनेस्ट टू मी. ही इज लाइक, गोवा में हमारा कोर ग्रुप है, हमारे 10 लोग हैं जो हम खेलते हैं रेगुलरली, बट गोवा आने के मन हमें सिर्फ एक दो लोगों को होता है, क्योंकि we feel a little bit intimidating. Poker players, like the way they talk on the table, the way they talk to us if we make a bad play. And he's like, he literally pointed to another recreational player who for the last one day had been correcting him for every mistake he was doing. He's like, यार ऐसे करते रहोगे तो मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं खेल रहा हूँ. एक और चीज़ भी हुई थी, एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था इंटरनेशनली, एक $25,000 का टूर्नामेंट जो बहुत बड़ा था. उसमें एक बंदा फ्री एंट्री जीत के आया था, एंड ही मेड अ ह्यूज स्टैक ऑन डे 1 एंड दे कुडंट फाइंड हिम ऑन डे 2. तो व्हेन दे ट्राइड टू फाइंड हिम, ही वाज इन द पूल, एंड दे आस्क्ड हिम लाइक, what are you doing over here, you have a huge stack in day 2, and he's like, people were just like mean to me, and he just sat out on day 2. He's like, मुझे नहीं खेलना bro, like you can google it, you'll find it. The guy was like, I don't want to play, people are just mean over there. I मेरे तो कैरिबियन वेकेशन की तरह आ रखा हूँ और मैं मजे कर रहा हूँ. So be nice to people, like जो recreationally खेल रहे हैं, and if someone's playing bad, he's playing however he wants to, do whatever he wants. Yeah, meetup games. Do I want to talk about the meetup games? Sure. Meetup games are happening. A lot of YouTubers are organizing them. And it's a very good chance where you can straight up take the camera into a casino and be like, I am here to shoot content. And no one will say anything. मेरा एक तुम्हें अगर याद हो, I think season 2 episode 7 was a video I made with like shooting in a meetup game itself. Andrew Nemi और Brad Owen का meetup game था. So I think I'll get opportunities like that this time round also. And like YouTube celebrities ही हैं यार वो, like 200 people show up, उनके जिस पे की meetup game है उनका. The game is also good. The biggest, I don't think they run like huge games. It's a 2-5 game only. पिछली बार भी मैं 2-5 खेला था. 2-5 कितना हुआ, 150-400 blinds मोटा मोटा. And it's still a fun game. मतलब एक दिन में आप in I think a 2-5 game you can make a little bit of money for sure, and for content as well it's great ना, कोई दिक्कत ही नहीं है. And पिछली बार भी मैं दिखाया था, I think I showed like a series of 4-5 hands which I played, and उसमें content अच्छा आया था, तो I'm going to be trying and doing that again.
अर्जुन चड्डा को देखो सिटिंग आउट ऑन डे 2. Bro, if someone's a billionaire, how does a 25K buy-in matter to him? It doesn't. But if someone's like constantly egging him कि तुम गंदा खेलता है बे, तू गंदा खेलता है, like poker players, अगर कोई वेगस में है, अगर तुम किसी ब्रेन सर्जन ने कोई गंदा प्ले किया और उससे तुम बोलो यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन आई हैव मेट, मतलब अंडरस्टैंड हिम एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ. ये थोड़ी ट्विटर में डिबेट भी चल रही थी इंटरनेशनली कि भाई मतलब हाउ डज अ पोकर प्लेयर कॉल अ ब्रेन सर्जन स्टूपिड. सो सबके अपने अपने रीजंस है पोकर खेलने के, एंड इट्स अ ग्रेट गेम वेयर एवरीवन कैन कम एंड प्ले टुगेदर. लाइक कैन यू गेट अ चांस टू प्ले विद माइकल फेल्प्स समवेयर सम अदर गेम, मतलब स्विमिंग करने जाओगे क्या उसके साथ, बट पोकर में खेलने को मिल सकता है बिकॉज ही कम्स टू प्ले WSOP. तो ऐसे ही चांसेस, मतलब तुम एवरी पोकर इज अ गेम विच, मतलब प्रेसिडेंट लोग खेलते हैं यार. ओबामा, there's I think an interview of his where they ask him how's his poker game, and he was telling कि हाँ पिछले ही हफ्ते तक खेल रहे थे हम लोग when he was in office of course. अभी भी खेलता ही होगा पोकर, तो चलता ही है पूरी दुनिया में. So it's a very social game of. Oh, talking about berating bad players. Yeah, of course. Talking, you're right, Mr. Arjun Chadda. Why would you want to berate a bad player? There's no positive thing. Like, if Arjun Chadda plays bad, why do I tell him and improve him so that he beats me more? क्यों? अर्जुन चड्ढा इतना गंदा खेलता है ब्रो, खेलने दो. Guys, Arjun's a good friend, so हम एक दूसरे की खींचते रहते हैं, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है. यहाँ पर ये नहीं खुलता है अंडर द गन. यहाँ पर 3.5 बिग ब्लाइंड और के लिए फोल्ड होगा. तो दैट इज देयर मीटअप गेम्स की. मैंने जैसे उत्सव ने पूछा व्हाट्स हर नेम, देयर इज अ वुमेन पोकर प्लेयर जो पोकर गो में भी टॉन डॉन की क्वींस और JRB के एस किंग के अगेंस्ट शी पुट इन क्वीन 10 सूटेड. आई थिंक हर नेम सम लिन, लूसी लिन, नो. There's one of her videos where I'm playing with her in commerce, and she's like, I have aces and I 3-bit this guy, and मेरे साथ वो hand खेला हुआ है, and उसके वो भी like she also likes to make content. I think she comes from the VC background. अब कौन कहाँ से है इतना नहीं, पर how much I'd heard of her was she was like a startup investor previously, and now she plays poker for fun as well as maybe professionally, maybe gets into the best of games. तो काफ़ी अलग मज़ेदार मज़ेदार लोग मिलने को मिलते हैं. And now the casinos also are opening up to letting people make content, right? जैसे एंड्रू नीमी और ये सब पहले छुप छुप के जाते थे, कैमरा निकाल के बलाजियो में खींच रहे हैं, बलाजियो वाले मना कर रहे हैं इन्हें खींचने के लिए वेगस में, अब बलाजियो वाले ही बोल रहे हैं आने के लिए. आई थिंक आई हैव टू गो विद दिस. एंड ओह पीछे भी तो बंदा है, सो आई गो विद इट एंड देन आई शो यू. आई हैव किंग क्वीन एंड आई एम प्रीटी मच डेड. इस 5 किंग क्वीन अगेंस्ट 10 बिग ब्लाइंड के ठीक ही था मेरे हिसाब से. Maybe I'm wrong. Maybe he's not shoving optimally. But I think I've seen this name enough times to think he would. And this is connected enough. Who's the biggest celebrity I've played with? Michael Phelps या Dustin Hoffman ही होगा. यहाँ पर ये डालना ही पड़ेगा. Dustin Hoffman, the Rain Man, and Michael Phelps. So we have Jack and an 8. So we have 2 pairs, guys. Thank you. Thank you. दिखाना भूल गया मैं, बट या आई टोल्ड यू आई हैड द जैक एंड द 8. एंड यहाँ पर भी वी विल बी गोइंग इन. एंड देखो वापस पहुंच गए हैं हम अपने 12 बिग ब्लाइंड सेफ जोन में. एंड मेरा जो कंटेंट है, आई वांट टू मेक कंटेंट विच हिट्स अ वाइडर ऑडियंस मैन. तो अगर तुम स्टार्टिंग से ही पोकर दिखाना शुरू कर दो ना, तो वो थोड़ा दिक्कत होती है. जिसको पोकर नहीं आता है तो वो काहे देखे.
So instead, my content this time around is going to be me showcasing me traveling to, let's say, Los Angeles, meeting up with friends over there a little bit, and then showcasing poker also. Poker भी दिखाना चाहता हूँ मैं, obviously, like it's the main reason I'll be there, but it's not the only thing which I want to show, because we all want new players to be coming into the game, right? उनको दिखाने के लिए travel, lifestyle, ये सब type का content दिखाते हुए we are placing product out there कि poker भी हम खेलते हैं and poker is a skill game. तो वो चीज़ दिखाने के लिए मेरे जैसे, टू माई बी ऑनेस्ट, जो मेरा इंस्टाग्राम है फर्स्टली वाज ऑब्वियसली माय कॉलेज एंड स्कूल फ्रेंड्स ओनली. सो when I used to post poker content, they're like, क्या post करता है, हमें पसंद नहीं आता है. So I then started posting like travel and poker together, and then they making them understand कि भाई poker it's a skill game, ये सब. So yeah, now most of the people on my Instagram are actually poker people only who follow me. So they like when I post poker content, but then my school friends are like, ये हमें समझ में नहीं आया. But they're still very supportive. Like main event पहली बार मैंने एक बार जब मैंने रिकॉर्ड किया था कि पूरी रन रिकॉर्ड करी थी. I had 8 over there, by the way. So like when I started posting and talking about it, like उस समय मेरे पास मेरे शायद 300 या 350 फॉलोअर्स थे ना. आई गॉट लाइक 100 मैसेज. मैंने बोला 100 लोग काहे मैसेज कर रहे हैं मुझे. बट एवरी वन लव्ड इट कि इतना बड़ा WSOP इवेंट खेल रहे हो. एंड इवन इफ दे डोंट नो अबाउट पोकर, दे लाइक $10,000 की बाइन है, फर्स्ट प्राइज क्या है, $9 million. So yeah, it just grabs eyes, right? So I want to personally make content which hits a wider audience. That is why I don't want to make content which is like hand analysis or yes, like commentary. I like doing commentary, and at the moment analysis वो वाली चीज ठीक रहती है. But like you, for YouTube in general, I want to make content that hits a wider audience. कंटेंट के बारे में मुझसे कितना भी बात करवा लो, मैं बड़ 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 करता रहूँगा. Okay, so we're going to be coming in with a raise with this hand. एंड 18 बिग ब्लाइंड लोग स्नैप डाल देते हैं. Hmm, 30 बिग ब्लाइंड्स. आई हैड किंग 8 ऑफ हार्ट्स, 30 बिग ब्लाइंड्स. उसने सोचा भी नहीं है और डाल दिया. Anything else, guys? Anything you want to hear about what my plans post WSOP are? I want to make content around with Indian guys also. So जो भी Indian मतलब दोस्त लोग होंगे या people who want to make content, I'll be more than happy to do it with them in Vegas. बहुत सारे लोग आ रहे हैं. I talked to Neil, he's already there. $2,500 का टूर्नामेंट आज खेल रहा था, मैंने देखा था इंस्टा पे. Abhishek Goindi is trying to come in. Karthik's going. Nishan, JD भैया, इन लोगों से तो बात हुई है. Dhaval's coming in, which I heard. KP would obviously come in. तो अपना कंटिजेंट ना एक मतलब अच्छा सा ग्रुप बन जाता है वहाँ पर, जिनको देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं. एंड पिछले साल तक मतलब 2019 तक लोगों का ये हो गया था, देखो कुछ हो ना हो, सिटिनको सेक्शन में अपना एक लौंडा बैठा हुआ होगा, उससे मिलने चले जाएंगे. तो इट यूज्ड टू बी रियली रियली फन. ओकी डोकी. प्लीज कुछ हैंड्स आ जाएं. एक और टेबल खोल दें क्या? इसको एडजस्ट करके कहाँ पर लगाएंगे वो बात जरूर इम्पोर्टेंट है. Just gonna show you the schedule also. इसमें छोड़ देते हैं. Okay, now in 41 minutes we have the phase, the 1.5 crore 8800 phase that is going to be running. And 500 वाली 30 lakh guarantee phase भी था जिसको मैं register कर सकता हूँ. The reason I don't want to like put out a big schedule also and आज इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि I have a COVID test which I have to get it done today and वो आज ही होना है second को. So that is why maybe I'll stream till like 6:37 and then come back and play the bigger buy-ins and play them more seriously
and maybe do it on delay and show the cards, all the cards. तो वो वाली चीज़ है। मुझे ये छोटी बाइंस ना स्ट्रेट अप बात करते हुए ज़्यादा करने का मन था than the traditional way of doing like a delay of sorts. So Psychonaut has raised, and okay, against him I think I want to do this because I don't think that against him. Yeah, and it looks more. अब बताते हैं, देखते हैं कार्ड्स अगर देखने को मिले, अगर उसने कॉल किया या किसी ने कॉल किया या so we just run into it, huh? Ace. So what I thought was, firstly, his range is Navdeep plays a bit tight, that's for sure, but I don't think I induce him with verse ever, and I can get him to call with verse, which is like ace queen and sorts, but I don't think I ever induce a player like Navdeep with verse, and I'll be doing it with some other hands also over here. So might as well just go with that strategy. And पीछे लोग short थे. So if I 3-bet, it just looks too strong against them also. So ace king वहाँ हमने डाला and we straight up run into kings. Wow. 800 के MTT के लिए क्या सोच रहा है? मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा है बाइन कहाँ अभी। हाँ, लेफ्ट वाली 800 है, राइट वाली 1650 है, बट वी आर ट्राइंग टू चिल एंड प्ले. तो दैट्स द सीन ओवर हियर. तुम कुछ फाइनल टेबल में पहुंचो यार अर्जन, उसके बाद वीडियो कॉल करते हैं, उसके बाद उसको स्ट्रीम करते हैं. मेरा गेम प्ले कौन देखना चाहता है? एवरीवन वांट्स टू सी मिस्टर चड्डा. तो बताना किसी भी दिन, लाइक एनीवन हु रन्स डीप एंड wants to come on call, I'll give you from my pocket some giveaway, man. We'll make content together, that'll be fun. तब चड्डा जी को कुछ नहीं मिलेगा, चड्डा जी को मिलेगा ठेंगा. एस 4 वर्सेस एस क्वीन एंड हार्ट्स तो आए थे लेकिन not gonna go work for him. Awesome. तो ब्रेक आ रहा है अपना 3 मिनट में. How's it looking like? 3 मिनट्स में ब्रेक है एंड कौन कौन अभी ग्राइंड करते हुए बात कर रहा है यार? चड्डा तो कर ही रहा होगा ग्राइंड. चड्डा तो ऐसा हो नहीं सकता ग्राइंड नहीं कर रहा है. एक और बंदा है जिसको कंटेंट बनाने में मजा आता है, आशीष. आशीष के साथ मैंने बनाया ही था ना गोवा में थोड़ा बहुत कंटेंट, और आशीष और अर्जुन तो चड्डी बड्डी ही है एक तरह से. I'm forgetting his name, man. Bhave, Harshad Bhave. Epic Whale, I think is Harshad Bhave. और नहीं तो क्या, ऑफ कोर्स चड्डी बडीज. Okay, we got a walk when we had the queen 5 off. लीडर बोर्ड जीतना है भाई चड्डा को, और क्या, इसीलिए तो हर एक टूर्नामेंट ग्राइंड होना है. The leaderboard is amazing, man. Pretty good amount of money out there to be won. Chadda, I think, will go for the winning strategy, which is like 5 tournament जीत जाओ, leaderboard जीत जाओ. हाँ, बारवे वही हर्षद बारवे. तभी तो like I knew, I've talked to him and name was just not hitting my head. मेरे और भी काफ़ी अलग अलग plans हैं content बनाने के. Like I have like video ideas written. So there was one which like, how much money did I win / lose last year playing online poker? And I have 5s, guys, and he has ace jack, and I think he will be winning it. And yeah, that is the case. So we are busted out of that.
वहाँ पर अच्छा स्पॉट था, पंजियाँ डाल दी, कोई नहीं। वो सिख, तभी भी हम 113 फिनिश हुए आउट ऑफ 470। मतलब 75% ऑफ फील्ड को तो पीछे छोड़ ही दिया, और 10 लाख गारंटी, 11 लाख तो बन ही गई। तो प्रीटी गुड ना, पूरी सीरीज ही दिख रही है कि कितना मज़ेदार होने वाला है। बिकॉज ओह, ये दूसरी टेबल को भी इसने यहाँ ले सेम ही मान लिया। कार्ड हाइडर 2 को भी छुपा देते हैं, एंड एस 9 वर्सेस एस 5 का गेम चल गया। Am I defending this? I think maybe I 3 bet this 0। सोच लो कैसे करना है तुम्हें। I check। ब्रेक हो गया है भाई, सबको ब्रेक में जाने दो। सो इफ इट्स 7:30, एक बार शेड्यूल में देख लेता हूँ ब्रेक में ढंग से, समझ में आएगा क्या 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 कर सकते हैं क्या नहीं। सो द नेक्स्ट टूर्नामेंट विच विल स्टार्ट इज इन 34 minutes, द 8800। आई वांट टू लेट रेज दैट। यप। एंड अभी एक और टूर्नामेंट चल रहा है जिसको मैं लेट रेज कर सकता हूँ, जो मैं खेला नहीं अभी। 550 का जो फेज चल रहा था, सो आई सेट दैट अप टिल देन। 15 बिग ब्लाइंड अभी भी मिल रही है, सो दैट इज़ गुड। इसको लगा देते हैं यहाँ पर। एंड या ये तो ले आता हूँ मैं टेबल 2। just got to find out 550 and 550 है ना, बढ़िया। एंड अनहाइड एंड हाइड, ओके ठीक है। यहाँ पर भी छुपी गया है वो। कार्ड हाइडर अनलॉक करके थोड़ा सा, ओ ये तो टेबल हिला रहा है, मुझे तो इसको चेंज करना था थोड़ा सा। यप, दिस इज डन, गुड। सो गाइज यू मस्ट बी गोइंग ऑन ब्रेक एज वेल। तो ब्रेक के बाद तो वापस मैं आऊँगा ही। आई विल बी प्लेइंग दीज 2 टेबल्स फॉर अ वाइल। एंड अभी कोविड टेस्ट के लिए जाने के लिए आई माइट जस्ट टेक दीज ऑन माई मोबाइल फ़ोन। यहाँ मेरे दोस्त लोग, कॉलेज के दोस्त लोग, जिनके साथ थोड़ा बहुत मैं पोकर खेलता था, वो अपने घर में बैठ के टीवी पे देख रहे हैं। ऑलवेज नाइस टू फील सपोर्टेड, राइट? ऑसम। यहाँ पर काफ़ी शेड्यूल तो काफ़ी सही लग रहा है यार। अभी 7 बजे ये है, उसके बाद 7:30 बजे भी है 880, एंड देन 8 बजे 4440 lakhs। ओह सिक, वाओ, दे आर एक्सपेक्टिंग 1K रनर्स मैन। गारंटी तो तगड़ी है। एंड फिर यार बिल्कुल लीडर बोर्ड के लिए जिनको लड़ना है तो उनके लिए तो टूर्नामेंट्स ही टूर्नामेंट है। 8 बजे, फिर 9 बजे 500 रुपये का 30 लाख। मतलब 500 रुपये का 30 लाख जरूर। दैट्स द फेज 1 विच वी जस्ट रजिस्टर्ड। पर तभी भी 3300 में 20 लाख। आज का शेड्यूल सही है, पहले दिन स्टार्टिंग विद द बैंग। एंड ऑलराउंडर 11 लाख रात के 11 बजे। बढ़िया। ओह, एंड इट डजंट स्टॉप देयर। रात के 1 बजे, रात के 3 बजे। वाओ बॉयज, डीप रन करने को तैयार हो जाओ। तब साढ़े रात के, ओह माय बैड माय बैड माय बैड, कंप्लीटली माय बैड। मैं तो ऐसे बोल दिया था ये क्या रात पे क्या खिला रहे हो रात के 3 बजे। रात के 11 बजे इज द लास्ट टूर्नामेंट, एंड देन द शेड्यूल रीस्टार्ट्स एट 1 PM टुमारो। सो या वो चीज़ मुझे लगा ये तो पूरा 24 आवर सेशन बनाने वाले हैं, ऐसा कैसा।
16 hours की grind for the leaderboard. Yeah, man, sick. Arjun, I hope you finish in top 3, man. Like, तेरी grind तो है ही. You are a leaderboard champion. ये फिर से आ गए हैं चैट में मनुष्यत. So yeah, 16-hour grind, man. I don't even think online. I feel honestly, I feel like I am getting outplayed in some spots, and मतलब of course I am being outplayed. Like इतना मैं मेहनत नहीं करता हूँ जितना लोग करते हैं. So they've improved. एंड वही चीज़ होती है. यू प्ले बिग फील्ड टूर्नामेंट्स ऑल्सो, द क्रीम ऑलवेज राइजेस टू द टॉप. और गलती से मैं वहाँ कहीं पहुँच गया, सो देन यू आर लाइक इस स्पॉट में क्या करना चाहिए, ये वो नहीं. एंड दोज पीपल हु आर वर्किंग ऑन देयर गेम, उनको मतलब हर एक स्पॉट पता है. एंड यहाँ मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज में. बट स्टिल समहाउ आई कैन स्टिल होल्ड ऑन माई ओन. पर लगता नहीं है, अगर मेहनत करनी शुरू नहीं करी तो लग रहा है अपने को ही बाहर करने वाले हैं. Arjun, only big dreams, only the top position will do for him. He's like, I don't care about anything else. I just want to go for the top spot. Awesome. So, guys, also, if you're not following me on Instagram, the Instagram handle Nomadas is written over there. You can definitely follow me, and उसमें काफ़ी ज़्यादा content आने भी वाला है अभी. Sick response on Instagram also, man. मैंने कितने टाइम बाद तो एक as in reel डाली. Reel is some sort of a post itself, वरना I just post stories. And like holy shit, the number of likes. Thanks for the love for the community, man. Great. मज़ा आता है ये सब देख के, तब लगता भी है कुछ बनाने का है. वरना इट्स प्रीटी टफ. एंड आई एज अ कंटेंट क्रिएटर आई एम लकी, राइट. मेरा एक बेस है कि पोकर में लोग जानते हैं, तो उसकी वजह से पोकर में कंटेंट बनाना आसान हो गया. लोग आते हैं, देखते हैं. बट अदरवाइज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एज अ कंटेंट क्रिएटर, इट्स लाइक सो टफ. मैं कंटेंट क्या बनाऊं जो पूरे डेमोग्राफिक को हिट करे एंड वो सब. I do want to make content which hits like all the demographic, like financial education पे videos बन सकते हैं which helps poker players also, how to get credit cards which won't charge you anything on international trips, like 4x fees है ही नहीं या इतनी minimum है कि उनके rewards points से. I love doing that. Like I right now have like 8 credit cards which are actually lined up over there. मैं अपने किसी अब एक बुकिंग्स कर रहा था, ये क्रेडिट कार्ड ऐसे सब लगे हुए ही हैं यहाँ पर. And yeah, I love let's say hacking rake back in one way, right? This is one sort of rake back only. तो उस वो चीज़ करने में मुझे मज़ा आता है. All right, our break is ended and वापस आ ही गए हैं. Man, this chat bot is killing me. Remove. Put user in timeout. रिपोर्ट. सब कुछ तो कर दिया मैंने, अब क्या करूं. कैसे नहीं जाते हैं ये लोग. Pretty idiotic. And we fold the small blind. कंटेंट की अगर बात करूं, आई वांट टू मेक कंटेंट बट आई डोंट only consider streaming as content. Like I want to do a bit of streaming also, but streaming काफ़ी ज़्यादा पोकर स्पेसिफिक ही हो जाता है कि सामने भी पोकर ही दिख रहा है, पोकर के बारे में ही बात कर रहे हो. तो मुझे एंड एज इन मेरी पूरी टीम को भी ये है कि वी वांट टू मेक कंटेंट दैट गेट्स पीपल इनटू पोकर और shows the life of a poker player. जो अभी essentially जो मेरे डेली ब्लॉग्स आने वाले हैं, it will be let's say 60% lifestyle travel, the things one needs to do to get there, ये सब चीज़ें, and then poker as well. So थोड़ा extra audience push तो आए कम से कम. Like working on thumbnails, titles, all the stuff.
So we'll be shoving over there and we'll be calling. Or we're blind or still blind? No, no, he's raised. We're just calling and we're checking. And कहाँ पर जहाँ पर हमने शव किया है. Okay, so on this board, actually I go this and then I decide if I should be shoving or not. This is a scare card for him. Do I expect him to check like ace of hearts, king of hearts type on the flop? No. So yeah, I do go for the all-in over here. And he calls, he has the king of hearts, but I have the ace of hearts. देखो chat को भी फंसा दिया था ना मैं. He actually checked ace king with the king of hearts, which ठीक ही है. मतलब he's strong also with his checkbacks. मतलब decent strong enough. वहाँ पर उस बोर्ड पे इज नॉट ऑलवेज. मेरे स्टैक साइज पे भी डिपेंडेंट रहा होगा. उसने बोला होगा इसके पास क्या ही होने वाला है. यहाँ हैव अ ह्यूज हैंड, नॉन पेयर्ड हैंड बट स्टिल अ ह्यूज हैंड इन दैट स्पॉट. gonna be folding. Sub only mode. Yeah. How old am I? I am 31. Sub mode for chat एक बार जाके देखते हैं. मैं I'll try to go in my YouTube studio and make it sub only chat, because this is pretty irritating what that bot has been doing the whole day. uh, तो ये वाली stream में I really like कि me staying in this place. I had no issues with the internet. Yeah, it was obvious. I understand. But सब only chat कहाँ से करते हैं ये पता होना चाहिए ना मुझे. uh, let's find out. Customize. All right, we found it. Minimum subscriber time 10 minutes. After watching for 10 minutes. All right, now hopefully we don't get that shit. Turn down subscriber mode only. So yeah. And actually all in, yeah, I have sevens, 7 of spade and 7 of diamond. He has the flush draw now, the 10. He has 2 pairs. So my sevens did not hold over there. क्या मछली हैं हम. मछली जल की रानी होती है. But yeah, maybe the bot is, bro, like I thought the bot would be smarter than that, right? Maybe the bot is subbed also. Maybe half of the population on my channel is actually bots only. This is a fun spot with this guy sitting over here. I had ace 5 off over here, तो वो पिकअप हो गया. सब्सक्राइबर मोड इज ऑन. अर्जुन देख रहा है अब. ओ शिट, मैं ही सब्सक्राइबर नहीं हूँ. अब 10 मिनट बाद चैटिंग होगी. देखो सच सच निकल जाएगा. अर्जुन, if you don't reply within 5 minutes, I'll get to know that you were not a sub. And that would make me a little sad. Guys, अब ये big celebrities लोग जा चुके हैं. So if you were not, maybe we're just living in the matrix. Yeah, that's true. Okay, Arjun was subbed. So you can post comments, man. Like there's 15-20 people watching over here. Definitely can start off a conversation by anything you want to talk about. All right. And अरे हमने बात ही नहीं की इसकी. अगर हो यहाँ पर तो लाइक. It's so
Uh, we've got so accustomed to hearing it from YouTubers, right? Like, share, subscribe, or Indians, kya maze mein. Oh, Harshit, here you are. I think we changed tables with you, man. And we were playing a little bit with you. I don't think I was playing at all. We were just having a fun time over here. What stakes do I play in cash? I played a bunch of stakes, matlab from really small to really big, relatively, because for someone that might be really small. Um, my beginning in poker, um, I think I started playing when I started playing cash. I was playing like 5-10 rupees to start, but usse pehle I was playing different modes of poker, sit and goes, and all that stuff. Oh, you can see my cards? Holy shit! Why can't I see my cards? संजू पटेल मेरे साथ मजे मत लो यार. Okay. Oh, sick. I opened this. Why did I open this? This was an open shove. And now I put myself in a spot. So now I have to do this. And 12 big blinds के साथ ये क्या दिख रहा है भाई पत्ते दिखा भाई. Oh, पत्ते दिखा. So I show them when I want to. And that's why I don't have to put on a delay. So last hand I raised accidentally king 10 of clubs. I should have just shoved with 12 bigs. And फिर ये बंदा मुझे वहाँ 3 bet कर रहा है. So I let it go. And ये छुपा सकता हूँ मैं ऐसे दिखा सकता हूँ जब चाहूँ. So ting 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 ting. But at least I get to talk to the audience. So I think that is what I want to be more adamant on. No delay, direct talking. मतलब पहले मैं स्ट्रीम जब पहली वाली स्ट्रीम शुरू करी थी उसमें तो सबको पत्ते दिख रहे थे. एटलीस्ट नाउ दे आर लेस विजिबल. और तुम्हें दिखाऊं? आई शो यू मैन. आई व्हेन यू आस्क अ हैंड टू सी, मतलब डिले ही नहीं है तो तुम पूछोगे पत्ते कौन से, तो मैं पत्ते दिखा दूंगा उसी समय. एंड इफ इट्स अ बिग पॉट ऑफ कोर्स आई विल गेट टू शो यू. एंड यहाँ पर रेज करते हैं. डिले में इतना मजा कहाँ आता है यार? डिले में तुम इंस्टेंटली क्वेश्चंस कहाँ पूछ सकते हैं मुझसे? डिले में सीखने को मिलता है क्या? यहाँ पर सीधे सोचो ना कि बटन पे इस बंदे के अगेंस्ट इस टैग साइज में कितना रेस, क्यों मैं बेट कर रहा हूँ एक बिग ब्लाइंड. स्नैप पूछोगे, स्नैप जवाब आ जाएगा. क्यों पूछना है कि इतना? भाई 5 मिनट बाद मेरे को क्या पता मैंने बटन क्या रेस किया है, तुमको क्या पता है कि तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे. सो दैट्स द थिंग. आई थॉट दिस वुड बी अ मच better way to do it. Oh yeah, I saw a photo. Harshad was in Vietnam, right? How did the live series go, man? I saw people chilling after the live series. I think my favorite trip ever has been Vietnam. I traveled, backpacked for like 24, 25 days, and then ended up playing a live series over there. एंड इसके साथ ही हम ये ऑल इन जाते हुए, अगर किसी ने नहीं दिखाए कॉल किया तभी भी दिखा देंगे, कॉल किया तभी भी दिखा देंगे. आई एंडेड अप प्लेइंग अ लाइव सीरीज ओवर देयर एंड आई थिंक आई एंडेड अप कैशिंग लाइक $30,000-40,000. सो वो ट्रिप भी पूरी अमेजिंग थी. सो वी आर किंग्स अगेंस्ट नाइन्स. दिखा दिया ना मैंने जब दिखाना था. देखो स्नैप किंग्स आ गए, अब छुप गए, फिर आएंगे ना क्योंकि. एंड उसके बाद पोकर में भी क्या रन गुड हुई. एंड pretty amazing trip as a whole. And मैं देख रहा था Romit and Zarwan and these guys. I think they're living on a boat for 3 days. Pretty amazing stuff. Live series sucked, but much fun for sure. Come on, man. IOPC आ गया है ना, फिर से एक टाइटल तो आना है. एंड फिर लाइव सीरीज आर लाइक, यार सैम्पल साइज क्या ही है, 7-8 टूर्नामेंट खेले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. एंड उसमें यही दिक्कत है. एंड पोकर प्रोफेसर शव्स आई हैव डूस 3 ऑफ सूट, सो वो जाएगा.
मैं देख रहा था पूरे इंडियंस के लिए पूरा अच्छी तरह अरेंजमेंट्स हो रखे थे, अपेरेंटली स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स हो रखे थे, तो वो भी सही था। वियतनाम इज ग्रेट प्लेस। मैं तो नेपाल, अगर मैं इंडिया होता तो मैं आईपीसी खेलने जाता नेपाल। एंड व्हाट आई हर्ड वाज एवरीवन हैड अ लॉट ऑफ फन मैन। ये सब लोग जो खेलने गए, आलोक बेरवाल ऑब्वियसली हैड द मोस्ट फन बिकॉज ही वॉन द हाई रोलर टूर्नामेंट। तो वो तो फन फन की ही बात है। आई सॉ दैट फाइनल टेबल एक्चुअली। अर्श वाज ऑलवेज लाइक हैंडकफ्ड, एंड थोड़ा सबने ही आलोक को बहने दिया, एंड आलोक ने बह के सबको मसल दिया। वी गोना बी रेजिंग द राइट टेबल विच इज द 550, एंड देखते हैं कोई कुछ उसमें कुछ करना चाहता है या नहीं। एंड गाय गोज ऑल इन, एंड देखते हैं उसके पीछे कोई और लोग करेंगे या नहीं करेंगे कुछ। अभी ओम, सो यू कैन सी आई हैव क्वींस, I obviously call, he has ace jack, we have clubs, we get there. See, never fear. That is the most important thing. Never fear. आराम से, we have clubs, man. We always go clubbing. लगाया अपना क्लब, क्या दिक्कत है? And I put myself in a tough spot, but maybe I have aces. Who knows? Second table I have raised, I got 3 bet shoved and I got 4 bet shoved. ये अमन फिर से 3 bet कर दिया है। अरे ये बंदा, आई हैव, दिखा देता हूँ। लोग बोलेंगे दिखाते नहीं हो पत्ते, पत्ते देखो भाई, पत्ते देखो। एंड ये रेस फोल्ड होता है। उस बंदे के अगेंस्ट 22 बिग ब्लाइंड में नहीं कॉल ऑफ कर सकते। लगा दूंगा मैं, नहीं लगाया ना, बट या रेस फोल्डिंग दैट। सो देयर इज दैट फन। 2 सेकंड पहले हुआ, तुम अगर चैट में पूछते पत्ते दिखा देना भाई पक्का, तो मैं पत्ते दिखा भी देता अगर नहीं दिखा रहा होता। So that's the case. I just wanted this to be like a more interactive session. And we have 4 deuce off in the big blind, so we fold. Live series are definitely like opportunity cost भी बहुत महंगी होती है ना, क्योंकि जाना है, फ्लाइट्स, बट देर सोशल इवेंट्स एज सच ओनली। मिलने को दोस्तों से मिल हो टाइम मिलता है। What do I want to bet on this flop? Actually, okay, let's go this. And our man decides to raise over here. इन पे क्या नोट है? 3 bets a very small. Oh, ये वो वाला बंदा है. I remember the hand also we played together actually. So on this board, I'm gonna go this. Yeah, this is the best format, man. So okay, so now he's, I guess. Good for you, bro. Good for you, bro. You just have it, huh? You have it. 7. कैसे लगाते हैं यार लोग? Just they are born with it. मतलब रेज री रेज तक तो मुझे समझ में भी आ गया था कि फंस ही गया हूँ मैं शायद, बट ठीक है, लेट देम हैव इट। सी दे फ्लॉप्ड इट, हाँ, मेरे बॉटम टू वेयर आई एम unblocking the top pair, I am unblocking hearts. Am I unblocking hearts? I think I was unblocking hearts. Or did I have the 7 of hearts? Yeah, I was unblocking hearts, man. अब अगर तुम मुझसे अभी पूछना चाहो, जैसे someone who's new, what do you mean? You mean unblocking hearts? मतलब there is chances he has more hearts because I don't have hearts, and then I'm unblocking top pair because I have bottom two. So I thought it was a good spot to get in. I have queen 10. Please, queen. Queen. Oh, nuts. Only nuts. Only nuts. So we standard shoved queen 10 and दसिया ने call किया and we get there. That is how it is. We run good in life. I've told you a number of times. But कभी कभी लोग nuts लगा देते हैं flop पे. That will be going out. That will be going out as well.
Hmm. Awesome. एंड अभी जो ये 7 बजे वाला टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इसकी गारंटी 1.5 करोड़ है। और इसकी तीन चार चार पांच फ्लाइट तो होनी चाहिए। आज क्या डे है? टुडे इज वेडनेसडे, राइट? सो देन इट विल प्रॉब्ली बी, टुडे इज वेडनेसडे और टुडे इज थर्सडे। आई थिंक टुडे इज वेडनेसडे, टुडे इज थर्सडे। इन इंडिया इट्स थर्सडे, यहाँ अभी अभी थर्सडे शुरू हुआ है। ऑलराइट, सो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन प्रॉब्ली अ संडे टर्बो। तो 4 फ्लाइट्स एंड देन संडे डे 2। Sick. This tournament will be sick, man. क्या first prize would be like 25 लाख अगर गारंटी ही पर ही पहुंचे, बट स्पार्टन गारंटी बीट तो कर ही देगा। So like 30 lakhs for first for a 8K buy-in. Pretty amazing. ये जैसे मैं रहता था, आई यूज्ड टू लिव विद साहिल, साहिल अग्रवाल, इफ यू नो, फ्रेंड commonly known as एंटी लॉग। एंड हम लोग 2015 2016 में बात करते थे, क्या कभी इंडिया में ऐसा होगा कि 5,000 रुपये का टूर्नामेंट 10 लाख गारंटी आ पाएगा क्या इंडिया में कभी? एंड लुक एट इट नाउ, लाइक 5,000 रुपये का गारंटी में, 5,000 की बाइन में करोड़ गारंटी, 8,000 में 1.5 करोड़ गारंटी। इट्स सिक मैन, हाउ द गेम्स हैव, लाइक हाउ इट्स risen up the ranks. 10 for deuce. No, 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 no. We get to take it on the right. I had queen jack off with the one heart. So 11 big blind and 21 big blinds. How much have I bought in today? I think I bought in close to like, yeah, 10K or something. उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इट फील्स नाइस, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक एक टूर्नामेंट खेल रहे होते थे बाइन का, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पेन तो दिखता है। लाइक इफ यू फायर लाइक 5 बुलेट्स इन द 11K, आखिरी में यू आर थिंकिंग लाइक 55,000 जा चुके हैं। यू आर नो वेयर क्लोज टू द मनी। तो नाउ व्हेन यू प्लेइंग स्मॉलर, तो इट हर्ट्स लेस। इवन इफ यू प्ले बैड यू वोंट कर्स योरसेल्फ दैट मच। पर अगर किसी बड़े बाइन टूर्नामेंट में करेंगे। ओह थैंक यू अर्जुन, वी हैव 6 फ्लाइट्स फॉर दैट, हाँ 8.8K। मुझे लगा 5 ही होंगी, बट वी गॉट 6, तो सही है। एंड यहाँ पर आई बी फोल्डिंग फोर्स। ऑफ कोर्स यू विल हैव 6 day 2 स्टैक्स। एंड एस 9 जीत गया। एंड यहाँ पर राइट में, Ajin, what was your last IPC buy-ins? I'm really interested to know how much does a full-on online reg buy-in, like buy-ins. I'm not talking about profits or anything, just buy-ins. Gonna be raising there. So I've got cold called, which isn't good news ever. And अरे उसके पास है, उसके पास जो भी था अपने पास ट्रिप्स है। ओप्स ओप्स, नो दैट डिड नॉट हैपन। इसीलिए थोड़ा जल्दी दिखाना चाहिए और फिर बंद कर देना चाहिए, पर ठीक है। अगर ये 4 लोग देख रहे हैं यहाँ पर, व्हाट डू आई वांट टू डू ओवर हियर? आई थिंक आई स्टिल वांट टू बेट, एंड या आई विल, आई हैड एन एस ओवर हियर, so not the best board for
the hand which you might have seen. We're going to go 25% on this board because that gets the job done a lot of the times. एंड मेरी रेंज का ही बोर्ड है पूरा. तो जैक्स थे मेरे पास वहाँ, गलती से शायद दिख भी गए थे. मैं सोचता हूँ 6 में से एक तो बन जाएगा. आप 6 बना रहे हो. वी आर नॉट द सेम. एग्जैक्टली अर्जुन, वी आर नॉट द सेम. Around 16 to 17 lakhs for full schedule, including 1 lakh SHR, was Arjun Chadda's last IPC buy-in. Wow. I know I lost 2,40,000. I think my buy-in was close to. I didn't play the whole schedule, obviously. I started it the way कि हाँ मैं पूरा खेलेगा, but day 4 तक समझ में आ गया कि अपने बस की नहीं है अब. जवानी नहीं रही अपने में. Otherwise, back in the day, I've been a grinder, man. There used to be 100 tournament series which used to run like 15 days. I've played all 100 tournaments. तो वो किसी ज़माने में करे हैं मैंने. But yeah, it's gotten tougher. But wow, 16 to 17 lakhs is pretty sick. Okay, I'm not going to ask profits or like numbers, but I'm going to ask, was it profitable or was it a loss? Because everyone's looking up to you straight up. I think everyone on this chat, I don't think anyone plays more than you. And this spot will be going in. यहाँ पर ऐसा हो गया है कि ओपन फ्लैट फ्लैट 3 bet. तो आर हैंड गोज ओवर देयर. अब हम फॉर्चुनेट हैं अनफॉर्चुनेट हैं, उसकी होल्डिंग क्या है उस पर डिपेंड करेगा. एंड ही डिड 3 bet and he calls. He has ace queen, we have top set, he has straight and he wins. So sometimes top set doesn't win. That happens. It's all right. Happens to us a fucking frequent lot. But oh shit, no problem. कोई नहीं. Hema Kunu, good for you, my man. Good for you. And if I close that table, my other hand will show up. So I want to firstly hide my table 1 and then make table 2 the main one. Okay, that did not board as well as I wanted. But now I can do something else and showcase you on table 1. No. I can showcase something else. Okay, he's 3 bet shoved. I'm sorry, bro. I'm not trying to slow roll you. Okay, what do I have? Oh shit. I have ace queen. I'm calling. He has tens, and we do hit the ace. So वहाँ पर I want a flip, big flip. हरा भरा था भाई अर्जुन चड्डा. Look at that, 16-17 lakh in buy-ins and हरा भरा. Great man, great grind. Holy sick. It's just it's not even the amount, the money. It's the number of tournaments you would have grinded and the hours you would have grinded that I'm in awe of. Like I've grinded those hours like long ago, so उस समय होता था. लेकिन अभी भी you're doing it for a while. ऑनलाइन पोकर काफ़ी टाइम से खेल रहा है अर्जुन, if you guys don't know, and काफ़ी टाइम से किल कर रहे हैं ऑनलाइन पोकर को. So green and yeah, great man. You were definitely going for the TLB and still great result regardless. Hara bhara. 1 lakh SHR. 1 lakh SHR is a sick one online. मतलब wow. I remember मैंने स्पार्टन का ही SHR एक बार दिखाया था ना, IOPC का ही था शायद, जिसमें our good friend Anmol Srivatsa, being a PLO crusher, he won the game of tickets, I think, and won like 7 tickets worth 1 lakh. And he essentially ended up like, oh, straight flush था किसी का वहाँ पर दूसरी टेबल में, but you couldn't see. He ended up firing ताकि
रेक बैक तो मिल जाए उन बुलेट से. एंड डीप भी गया था. वी एंडेड अप स्ट्रीमिंग दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिकेस्ट स्ट्रीम. आई थिंक दैट वाज द मोस्ट viewed stream of mine. At peak concurrent viewers, I think we had like 200 people. तो it just as a community, अगर और लोग involve होते हैं, then people want to see different people every time play poker. And especially people who are playing high stakes, someone who's a PLO player is just playing a 1 lakh tourney for the lols because he's a high stakes PLO player. So a lakh buy-in is not even half a buy-in in his PLO table, or even less, maybe a quarter of a buy-in. Hey, thanks, Karan. Nice to see you here. I saw a few messages of yours somewhere else as well. So thanks for the support. और क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ पर? Let's see the lobby of okay, so table 1 पे मैं वो दिखाता हूँ. Okay, this looks good. यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ शायद. Table 1. So this is the lobby for the 8800, which is just starting. People are sitting down. एंड देखते हैं उनमें से हम किसी को पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं. काफ़ी लोगों पे मार्क तो है. तो या काफ़ी लोग हैं इधर. 88 people are already in. सही है यार. ये वाले का स्ट्रक्चर. ओह, आई हैव गॉट अ हैंड अपेरेंटली. आई रेज. एंड इन्फो में जाके देखें तो 10 minute स्ट्रक्चर, 12,000 स्टार्टिंग में 240 बिग्स. नाइस. ओह, ये क्या हो रहा है? ये नहीं ओह, मैं गलत चीज़ दिखा दिया. टेबल 1 में मैं बंद कर दिया क्या उसे? ओह, आई क्लोज. दैट्स व्हाई इट क्लोज्ड. माय बैड. एक और बार खोलते हैं. All right, against that sizing, we fold the 4-6 off. And yeah. मेरे बहाने WS भी देखोगे यार. जाओगे तुम भी, क्यों नहीं? I want to be raising this against him, probably more than others. ठीक है. He calls, turns a queen. We check. He checks back and I check. मैं ऐसे सोच रहा था I can pick off bluffs which are like king highs, and then I'm like some king highs even get there, right? But यहाँ पर he's essentially like sizing. देखो लॉन्डे की बड़ी sizing है. He's not saying I'm not even afraid of the ace, or I have an ace. Like you did not bet the river, so I'm guessing my ace is good, and he's going for that sizing. So he's never betting a queen. I have a 5. I have 5-6 of hearts. So I'm just thinking कि मैं यहाँ call कर सकता हूँ. Are there enough floats? I block. Nah. ठीक है, I was folding only, so it's fine. At 5-6 of hearts, I think it's fine. Do I see enough floats over there? But then floats, some of them get there also. Oh, nice, Karan. How was your experience? Such a great experience for poker abroad. Yeah, वही है. हल्के हल्के करके निकलने को मिलता है.
I'll tell you, my first Vegas trip was a free roll. My first Macau trip was a free roll. My first Goa trip was a free roll from the IPC folks. पहले ये free roll organize करते थे, like free to enter tournaments, and leaderboard बनता था उसका, and that is why I played my first live tournament, a 5K buy-in tournament for free through the IPC folks. And मुझे याद है मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, and I think I had 1300 rupees more, like except the hotel and other stuff. And hotel भी ऐसा कि कुछ भयंकर नहीं. I think we were staying in a hotel which was like $600, sharing obviously. And मेरे दोस्त ने मेन इवेंट की सीट जीती थी शायद 30,000 की. तो I did ask Peter. I was like, see, firstly going in there, ब्रेक में मैंने अपनी चिप्स उठाने को मैं उठा रहा हूँ, मैं बोला जेब में रखनी है क्या. सेकेंड थिंग आई वाज आस्किंग इज लाइक, is the food free or do I have to pay somewhere? And then the other thing which happened is like when I busted the 5K, I asked and like requested Peter. I'm like, see, I don't have a main event ticket, but I love to come and just see the main event in the casino. I was like, I won't even eat food. Don't worry, I won't eat food. And he's laughing. He's like, yeah, man, there's no problem. It's nice to bring new players, new young players to the game, so you can come and see the main event. And I was railing my friend, पीछे से दूर से देख रहा था. तो वो सब अलग मस्त मस्त नए नए experiences when you're like really young college kid. तब great experiences. हाँ, अब फ्री रोल तो नहीं होते हैं, दैट इज ट्रू, बट लाइक it's tough, right? When you just start respecting time more as you grow older, and I think at least you should, because when you're young, I think you have more than enough time to waste, which you shouldn't, but you still have. Like instead of doing other things, you're like, ठीक है, कुछ अलग चीज कर सकते हैं, but as you grow older, you're like, maybe time is more valuable than money. Oh, on the other table, Surma Bhopali, which is Mr. Kanal Patni, I think, has joined. But since you guys are watching just one table, मैं उसको तो बंद कर देता हूँ, मैं भी काहे देखूँ. Yeah, man, it was serious. I was like seriously asking. Interview break जो है, उसमें chips क्या मेरी अपनी जेब में जानी है, और like is the food free was like a genuine question. I was like, is it free? Is it not free? If it is not free, why do I know how much it is for? So फेरी में कैसे जाना है, मेरा नाम लिस्ट में होगा नहीं होगा, those used to be the problems back in the day. अब तो घुस गए, हाँ हाँ पहुंच ही जाएंगे अंदर किसी ना किसी तरह, क्या ही है. So yeah, life changes a lot. Okay, he's limped. He's made it 3 bigs. I will make it 9. And yeah, यहाँ पर हमने 3 bet किया. And SMR1G1, oh, he goes in, and we're not folding. He has queens. I hope he somehow. Okay, we got there. Okay, hide कैसे करते हैं, hide कैसे करने, hide हो गए. But like I was equally rooting for him as well, क्योंकि मेरा stream खत्म करने का time भी आ रहा था. I'll restart again soon. So I was like, अगर वो जीत भी गया, good for him. I was like free rolling in one sense. If I win, I have a stack. If he wins, good for him. तो ऐसी चीज. I think I'll wait like 25 more minutes till next break, and फिर कोविड टेस्ट कराने जाना पड़ेगा क्योंकि हम जा रहे हैं अमेरिका. It's gonna be good fun. WSOP. What more ideas for content can you guys give me to make like in LA? I've thought about making content with a friend of mine who used to be a poker player but isn't anymore, and Meetup game का content बन सकता है LA में. मैं तो LA में सबसे पहले जाके टॉप गन देखने की सोच रहा हूँ. तो वो भी मेरे प्लान्स में, LA में अच्छे से किसी लाइक मूवी हॉल में जाके मूवी देखेंगे.
So what all other ideas can we have? Like मेरे को काफी दोस्त लोग मालूम है ऐसे बोलते हैं कि get like famous poker players. But the thing with famous poker players is they are famous in a very small community. So it just doesn't hit a bigger audience. I obviously I only मतलब I'll try to make some, but I can't be like हर दिन किसी famous poker player को पकड़ लिए या known poker player को पकड़ लिए. तो वो सब चीज़. पैसे तो ऑनलाइन में ही है करण. अरे करण तुम बना दे हो यार, लगता है बहुत पैसे. मुझे फिर से सिखा दो कैसे बनाते हैं ऑनलाइन. आई एक्चुअली ग्राइंडेड ऑनलाइन कब से? August last year से February 12th, the day IOPC ended was when I stopped playing online for the most part. एक दिन of course मैंने गोवा में वो वीडियो बनाया Sunday of a poker player and but February 12th, the last day of IOPC was the day I was like अब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ब्रेक लेते हैं. उसके बाद फिर गोवा में कंटेंट बनाने पहुंच गया मैं. देन मई में मेक्सिको पहुंच गया. ऐसे ही बिना देखे 4 महीने बीत गए एंड ऑनलाइन पोकर प्रोफेशनली तो नहीं खेला हूँ मैं स्ट्रेट अप. बट लाइक द 6 months I played from like August were really good. I made good money and yeah, मतलब अपने को थोड़ी अफर्मेशन भी मिली कि oh still I can beat the game. So that is something you're looking for, right? As a poker player who plays like in spurts online. मैं live खेलने चल गया तो 2 महीने नहीं खेले. तो वो चीज़. Walk around the strip and ask weird questions to strangers. I'm thinking of मेरे पास एक device है. I can show you. I love this device. It's called Osmo Pocket 2. Yeah. So it can live stream also. I've done a few live stream from Mexico with this previously. And it's got a stabilizer camera also. So while going on the strip, I can just straight up be streaming. Hey Aditya Singh, what's up? Hello, hello, welcome. And I can ask people questions on the strip itself. But I'll always remember it not to be Friday night. Friday night, anything can happen on the strip on Vegas. So I want to keep my content still PG, like okay-ish. So definitely not gonna be Friday night. Friday night in the Spanish word loco. Loco means crazy. It's like what are people up to in Vegas on Friday nights? It's just crazy. और हम पोकर प्लेयर ज़्यादातर पोकर ही खेल रहे थे. But if you're ever in Vegas and you want to play poker but for fun and then maybe meet up people on the poker table itself and मेरे दिक्कत क्या होती थी? 2016, I think I lived alone for the most part during the series. 2017, I think I lived with Sushi. The year he won the bracelet, if I'm not wrong. या 2018 में जीता सुशी. बट दोनों साल में रहा उसी के साथ. एंड तो ये होता है यार पोकर प्लेयर्स की सी प्रायोरिटीज इज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम आर देयर फॉर पोकर. आई एम देयर फॉर पोकर एज वेल बट आई टेक लाइक सम टाइम आउट टू डू अदर थिंग्स. तो एक दिन मैं फ्राइडे को कोई मिल नहीं रहा था तो मैंने बोला चलो देयर इज अ कैसीनो कॉल्ड प्लैनेट हॉलीवुड. I went to play poker over there. The game happens on the casino floor itself. So there are so many walk-ins. There's so much of more fun. Music is playing. It's not like a typical poker room vibe. And we ended up having like a lot of people coming in and एक फ्रेंच पोकर डीलर है जो ईपीटी में डील करता है उसका ग्रुप आ रखा था. एंड वी हैड लाइक a lot of girls also playing over there. So we ended up like हमने 2 tables आखिरी में 2-3 घंटे खेलने के बाद जो ऊपर नीचे हुआ we ended up breaking the table. We're like let's go party in Vegas on Friday. And सब लोग everyone knew how to play poker but they were like ठीक है पोकर हो गया उसके बाद घूमने भी चले. पोकर से you get so many opportunities घूमने फिरने की देखने की. You get money obviously if you're good at it. Contingencies sorry like asterisks. But yeah, it's an awesome place, Planet Hollywood. Yeah. What were you doing in Mexico if not playing? Good question. Good question. मैं एक्चुअली सऊदी अरेबिया के थ्रू आया था तो मैं 2 दिन डीसी में रुका था. आई प्लेड इन एमजीएम नेशनल हार्बर ओवर देयर फॉर 2 days. Honestly, lost both days, and then came to Mexico.
there were certain things I wanted to do in Mexico except playing poker. Personal life front. And yeah, we I ended up going to like a few places, traveling around. And मुझे थोड़ा ये मतलब रिलैक्सिंग टाइप ऑफ वेकेशन भी सोच रखी थी मैंने कि ठीक है 15 दिन के आसपास यहाँ रहूँगा and then maybe go to Colombia or that sort of thing. But then ये वाला प्लान आ गया कि मैं WSOP खेलने जा सकता हूँ एक बार और पहले ही and make content also. So I'm doing that. Thank you, Aditya. Thank you. Flame boy, let's not do that. What happens in Vegas stays in Vegas. Except STDs. They come fucking back home. I know this is a sponsor stream, but we're gonna be keeping it straight. We're gonna be keeping it fun. हैंगओवर का हैंगओवर जैसा ही सीन हो रखा है क्या कभी मेरे साथ वेगस में? मेरे साथ नहीं हो रखा बट लोगों के साथ हो रखा है. वन हाई रोलर इन द इंडियन पोकर सीन के साथ डेफिनेटली हो रखा है. अपने लकी गैसेस निकालो किसके साथ हैंगओवर का सीन हो रहा है कि उसे पता ही नहीं है वो कहाँ है. अगले दिन सुबह कोई और उसे हमारे पास छोड़ने आ रहा है. मे बी इफ यू आर राइट आई विल DM you that you are right. But yeah, most of the poker players, man, definitely super focused. Matlab, everyone knows why they are there. Uh, I've seen like people straight up. मैं तो कभी कभी बोलता हूँ चलो डिनर विनर चल लो ये चल लो ऐसा चल लो. नहीं, वी आर जस्ट गोना बी प्लेइंग. ये प्लान है मेरा हमारा डिनर हम घर पे है या इधर ही पास में जा रहे हैं. नो स्पेशल डिनर्स. Yeah, I want to do this. Oh shit, I folded accidentally. Maybe it was a lucky fold in one sense. Oh, ये बंदा इतना snap call कर दिया. Okay, I'll tell you after the hand finishes what I actually had. What I was trying to ISO these two guys with. The board is 8-8-5 and snap shove. इसका नाम क्या है? Nose bleed. अच्छा, nose bleed. All right, Mukti is thinking with ace jack. I had sixes. I wanted to ISO this guy thinking he's just too weak, but the way he snap called that 8 big blind, I think I would have won on that board. But पीछे वाला बंदा मुझे री-रेस कर ही देता वहां पर कहीं. No, मैं ये तो क्लियर करूंगा. सुशी इज नॉट द गाय जिसके साथ ये हुआ है बिकॉज आई लिव्ड विद आदित्य सुशांत द डिसेंट विद इन वेगस. तो लोगों को लगता है जो सारी कहानियां सुना रहा हूँ मैं वो आदित्य की सुना रहा हूँ. सुशी इज वेरी डेडिकेटेड टू पोकर मैन. स्ट्रेट अप वेरी डेडिकेटेड टू पोकर. And he gets more dedicated the more the worst trip is happening for him. He's done great recently in the live events. दो मेन इवेंट्स में सेकंड आया है या चॉप किया है. सेकंड भी क्या है चॉप किया है. But yeah, Sushi is not the guy. Sushi is very focused in poker. And look at him, he's reduced weight. अब मैं शायद उससे मोटा दिखने लग जाता हूँ. He's become more healthy and focusing on his diet, focusing on his game, and must have also worked on his game. He's improved, and yeah, he's doing great for himself. एक चीज मेरी जरूर हो गई. आई वन ऑफ सॉर्ट्स इज आई हैव बिकम अ लोन वुल्फ ऑफ सॉर्ट्स क्योंकि मैं ज़्यादा कम्युनिटी मतलब ज़्यादा ग्रुप्स का पार्ट नहीं हूँ. एंड लाइक मैं स्टेकिंग भी ऑन अ प्राइवेट स्टेकिंग टाइप हूँ. इट्स नॉट अ स्टेबल. सो दैट इज द केस. So do I want to bet this one? Yeah, I want to. So he calls and we do bet this, but we want stacks on the river. And he check raises. It's weird he check raises over here. I don't think he should have check raises except maybe. Does he have any check raises? Like I have nothing. I have king high, so I let it go. But check raise की जरूरत क्या है यार? मैं रिवर पे किंग हाई से डाल ही रहा हूँ. तेरे लिए फ्री गिफ्ट मिल रहा है. फ्री गिफ्ट चाहिए ही नहीं होता है किसी को.
ऑफ कोर्स आई मतलब ये चीज़ मैं कर नहीं रहा हूँ आज, बट शुड बी डूइंग दिस. Beep beep, I am a Jeep is Vinay Rajpal. Oh, he did. The reason I have a note on him is he did really good in last IOPC leaderboards. That's why I remember. क्योंकि पहले 4-5 दिन I was doing, I think, all right as well. So I was keeping a tally on who's doing what. But then after 5 days, like I was like, these boys are just too good. Hmm. All right, man. I'll give you your spin for your money because I have ace ten of clubs. कहाँ से दिखाता हूँ मैं? Okay, ace ten of clubs does not win. And yeah, I figured he might have smaller pairs, and figured one more thing, which was I wouldn't mind busting also. I wouldn't mind doubling up also. And यहाँ पर उसकी range has a lot of broadways, like king jack suited, queen jack suited also for 20 bigs. So ace 10 of clubs is still ahead of those small pairs के against. I'm doing fine. Mm, so that was the case. यहाँ पर फिर से open करके आ रहे हैं. You do day trading or just swinging? So I've not day traded for a while now. Could be probably a few years also. And I am mostly liquid right now. Just waiting for opportunities. And to be honest, I went liquid in the worst time. I should have gone liquid. I thought like March, April 2020 was the time, like when COVID started, where I thought it will be a much bigger downturn and then a much harder recovery for the market. Instead, the market went 3x, which is like, I don't understand. Like, no one understands, obviously. But who I am now, there's a huge correction right now. So I'm just liquid right now, hoping to get in. Pehle 2019 mein I did invest in US stocks also through interactive brokers. Indians can invest, but there's an extra tax. And like I had to choose between two stocks. One was Disney and Tesla, and I chose the sucker stock, which is Disney. Had I chosen Tesla, my investment would have been like 8x, 9x. All in on Luna. No, that is not the case for me. So right now, mostly into just I have like certain places where I put my money in, a little bit of money that you want to keep around, like maybe for depositing in sites or all that stuff. So I've invested like the max allowed in Cred Mint, so I get like 9% over there daily. Um, so at least I'm getting 9% instead of 2.5 in the bank, right? And then I invest like where else is the money? Yeah, pretty much the worst problem is I have it in the bank also a decent bit. So I'm just like literally, this is the time I was thinking of investing. जो markets का correction भी आया है, ये सब भी आई है. So yeah, wouldn't be the worst time to invest. I was looking at buying some things as well. I am gonna go for the check raise over here, as in property. So that's why I needed some liquid around with me. And he does this, so we go 80, should we? When we go 80, yeah, 80 should be good. We had top pair. We had the 10-9, but double flush draw board. I have some. I don't assume he has enough straights over there. I can have gut shots. I can have two pairs. I can have, like, I'm the big blind. I can have too many things. I have flush draws. I'll play flush draws the same way, so have to play top pair at least the same way. And he's recreational, so ठीक है, उसके अगेंस्ट शायद इतना बैलेंस की ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं स्ट्रेट ऑफ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा था वहाँ से. If he has like flush draws, if he has second pairs with straight draws with like ace के साथ वो second pair हो. कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताओ यार, अगर तुम खुद लोग इन्वेस्ट और ट्रेड करते हो. आई एम ऑलवेज अप टू हियर हाउ माय मनी कैन बी कंपाउंडेड.
सिर्फ क्रेडिट कार्ड के कैशबैक रेक बैक से काम नहीं चलेगा. I always interested, definitely. Obviously, I'm not going to talk about crypto and all that stuff over here. But if you know something, you can always DM. Isn't this the same board, 1034 two clubs? All right. Interesting. And guys, we are heading to break. I think this is the moment I'm going to be stopping the stream. I'll play this on my mobile itself. When something happens, I'll end up bagging for day two. And I mostly will be coming back for another stream today itself. Try playing another schedule after I've done with my COVID test. And the COVID test is a priority if I want to leave tomorrow. So I hope you understand. And we did a nice enough stream right now, close to 3 hours, and उससे पहले भी 1 घंटे की लगभग. Let's see. Try and try. Yo, यहाँ पर दिवेक मुझे बोल रहा है try 4x. 4x में काफ़ी हाथ जला है मेरा पहले भी. But yeah, I'll see something's. I guess you're talking about that. But yeah, thanks for being over here. Was fun doing it for the first time after a long while. And वापस आऊँगा. I think this format is good where there is no delay but the cards are hidden. So enjoy and IOPC अगर खेल रहे हो so best of luck. आज के दिन से ही पूरा leaderboard के पीछे चलना है. And Arjun, if you're watching, good luck to you, man. You've been here a while. You've been giving us information, and that's great to see. Take care, guys. Have a good day. Hopefully, I'll see you soon.